Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. So, picture the year 1965. Okay. The cultural landscape of Europe is just completely dominated by modernism. Clean lines, strict grids, this whole idea that a building is basically just a machine for living in. Right. Very utilitarian. Exactly. And right in the middle of this era, you have some of the most prominent cultural figures of the 20th century, including the legendary architect Le Corbusier and the artist Joan Miro. And they are genuinely furious. Like actually outraged. Yes, moved by this profound sense of artistic outrage, to the point where they draft a very public, very forceful manifesto demanding that the government permanently halts the construction of a specific building in Barcelona. Which is such a fascinating historical flashpoint, honestly, because it exposes this massive kind of unexamined bias we have about creativity and leadership. Yeah. Because the building they were protesting was the Sagrada Familia. And Antoni Gaudí, the original visionary behind it, he had been dead for nearly 4 decades by 1965. Right, long gone. Yeah, and Le Corbusier and his contemporaries, they were basically operating on this assumption of the solo genius. Right, yeah. To their minds, a work of such staggering idiosyncratic brilliance like the Sagrada Familia, it was just inextricably bound to the mind of its creator. It couldn't exist without him. Exactly. To continue building Gaudí's church without Gaudí actually there, walking the site every single day, was, in their view, an artistic offense. It was impossible to replicate his mind, so they thought the project should just be frozen in time, as this magnificent ruin. They fundamentally believe that a vision just dies with a visionary. Yeah. And that is the exact assumption we are challenging today. Because as we know, the construction of the Sagrada Familia did not stop. No, it didn't. The manifesto completely failed. The building continued decade after decade, surviving wars, financial ruin, everything. So we're looking at this central paradox today, which is how does a monumental vision actually survive and adapt and thrive generations after the person who conceived it is gone? It's such a massive question. It really is. And to understand this, we are unpacking an incredibly rich, rigorously peer-reviewed article published in the prestigious Academy of Management Review. Which is an FT50 listed journal. So, basically the gold standard for management and organizational theory. Definitely. The paper is titled, Toward an Architecture of Visioning, Insights from Gaudí's Sagrada Familia. And it's authored by Yi-Tin Lee of the IE's Business School. And what's great is that Yi-Tin Lee uses the Sagrada Familia not just as like a fun historical anecdote, but as this extreme test case to just completely dismantle our traditional corporate understanding of what a vision actually is. Right. He proposes that a vision isn't just a static document you frame on a wall in the lobby. It's a generative living system. It's so good. But before we map out the architecture of that living system, I do want to take a second to speak directly to you, our listener, about the architecture of our own discussions here. Yeah, some quick housekeeping. Right. You might have noticed a shift in our schedule recently. Starting from March 2026, we've actually transitioned to a weekly format, releasing our discussions every Sunday and Monday. Mm-hmm. Sundays are going to be dedicated to classic papers or comprehensive book reviews, while Mondays, like today, we keep the focus on unpacking publications from top-tier peer-reviewed journals. And we really owe a massive thank you to our loyal subscribers who have just been so supportive of this initiative. Truly, thank you. And the underlying reason for this highly specific release schedule, it actually connects to a broader sense of responsibility. Operating AI-assisted media at this level of depth, it requires just immense computing power. It really does. And that draws heavily on natural resources, particularly the considerable water intake required to cool back-end data centers. So limiting our weekly release is a conscious effort on our part to give back to climate change initiatives. We want to reduce our footprint without, losing an ounce of the richness and depth in these discussions. Exactly. It's really about building systems that are sustainable for the long haul, which honestly perfectly mirrors the academic community's efforts to build sustainable support systems for the next generation of researchers. Oh, absolutely. And that actually brings up an announcement that we are incredibly proud to share. The Academy of Management SIM Division, that stands for Social Issues in Management, is quietly launching a new monthly initiative starting in June 2026. It's called AOM SIM-Bytes. And it is just a brilliant concept. These are real-styled short videos featuring senior scholars and faculty from the management community.
The content is designed specifically to help early career scholars and PhD students navigate what can be a really overwhelming landscape of academic research. Yeah, it could be so daunting when you're starting out. Oh, totally. And the very first YouTube short they are releasing features Professor Ed Freeman. Oh, wow. The father of stakeholder capitalism. Exactly. Widely recognized as such, it's a huge deal. And the reason we are so deeply invested in mentioning this is that our own producer is actually a member of the SIM Curriculum Development Committee and has been actively volunteering with the committee leads for the past year to help plan the content design and edit this whole AOM SIM-Bytes initiative. It's been a massive undertaking. It really has. And the whole project is the brainchild of Professor Sheldine Simila from Trent University in Ontario, and it's now being executed and carried forward by the committee chair, Professor Jennifer Griffin of Loyola University in Chicago. So cool. Yeah, and you can find the link to AOM SIM-Bytes right in our show notes. Definitely go check that out. And while you're there, we also strongly urge you to make time to read the thoughtfully crafted article we're dissecting today. The link to Yi-Teen Lee's paper is in the show notes too. It really is a masterclass in how to extract profound organizational theory from real-world phenomena. It is. So let's ground the premise of this paper for someone who might be, brand new to academic research, or maybe a practitioner who is stepping into a leadership role for the very first time. Right. Let's set the stage. Because the traditional corporate approach treats vision as a noun. It's the polished mission statement on the website. Or it's the really charismatic speech a CEO gives at a quarterly retreat. Yeah. It's treated like an object. Right. You write it, you present it, and you just expect the entire organization to march toward it in a straight line forever. And that static approach is exactly why so many corporate visions just completely fail the moment the charismatic founder leaves or, market conditions shift. Things fall apart. Exactly. So Yi-Teen Lee argues that to build something enduring, vision has to be treated as a verb. Visioning is this continuous, recursive process. Visioning. I love that. Yeah, and by analyzing a church that has been under construction for over 140 years, the author reveals the actual mechanics of how a collective future is built. He breaks it down into 3 interconnected processes. Okay, what are they? It's how a vision is crafted, how it is anchored into physical reality, and how it's emotionally absorbed by future generations so they can actively co-create it. Okay, so let's really lay out the sheer scale of the challenge Gaudi faced here. Because the history of this project is just the ultimate test case for extreme uncertainty. It really is. The Sagrada Familia didn't even originate with Gaudi. A lot of people don't know that. Yeah. Construction began in 1882, initiated by a completely different architect under the Association of the Devotees of St. Joseph. Gaudi took over the project a year later, in 1883, when he was in his early 30s. Just a young guy. Right. And he worked on it obsessively until 1926, when he was tragically struck by a tram and died. He dedicated 43 years of his life to this single structure, and yet a full century after his death, the cranes are still moving. It's still moving. And the context of this construction is just defined by utter chaos. It is an expiatory temple, which means it has been funded entirely by private, voluntary donations from the very beginning. So no government grants? No massive corporate backing? None. If the alms dried up on a given week in 1895, construction stopped. There was zero financial security. Furthermore, a decade after Gaudi died, the Spanish Civil War broke out. Oh, right. Yeah. In 1936, anarchists broke into the construction site. And they didn't just halt the work. They systematically smashed Gaudi's delicate plaster models, they burned his original sketches, and they just completely destroyed his workshop. They intentionally tried to erase the architectural memory of the building. Exactly. And yet, despite the complete loss of the traditional blueprints, the project somehow resurrected itself. When I try to contextualize the audacity of what Gaudi attempted, I kind of think of it like a modern startup founder deciding to build a colony on Mars. Okay, I like this. Right. But they're relying exclusively on a GoFundMe page that might generate $10 a week, or it might generate $10 million, with absolutely zero predictability. A little nightmare for CFO. Totally. And then midway through designing the life support systems, the founder just accepts that they will definitely die of old age before the first rocket ever launches. Like, how does a human mind reconcile the reality that their defining life's work will only be completed by workers who haven't even been born yet? It's wild. It requires an entirely different psychological framework than what we teach in modern business schools. For sure.
If you look at pharmaceutical companies trying to sequence complex genomic therapies, or aerospace companies mapping interstellar probes, they are operating on multi-generational timelines. A charismatic CEO's speech at a town hall meeting just does not carry enough kinetic energy to sustain a project for 60 years. No, the initial motivation just evaporates as soon as the context changes. Right. So to ensure survival, the leader has to transition the vision from a personal dream into this shared, self-sustaining ecosystem. And according to the paper, the first major process in building that ecosystem is called vision crafting. It is how you imagine and articulate the future, but in a way that is highly magnetic. Yeah, and the author breaks this into 3 components: purpose-driven vision formulation, iterative vision deepening, and relational vision transference. Okay, let's look at formulation first, because Gaudi made a massive pivot when he took over the site. He did. He inherited a very standard, predictable neo-Gothic design. It was safe. It could have been finished in a reasonable time frame. He threw that out. Basically, yeah. He evaluated the cultural moment. Barcelona was rapidly industrializing and secularizing. A standard parish church just wouldn't serve a broader transformative purpose. He wanted the building to spark a spiritual renewal across the entire city. Oh. So he reimagined the structure completely. He synthesized architectural engineering with profound narrative storytelling. The paper highlights his decision to design 18 massive towers, each corresponding to a specific biblical figure: the apostles, the evangelists, the Virgin Mary, and Jesus Christ. He literally turned the building into a legible, skyline-dominating text. Exactly. But here's the really critical part. He didn't just draw 18 impossible towers on a napkin and then demand his engineers go figure out the math. The formulation of the vision was paired immediately with the second component: iterative vision deepening. Gaudi understood that to build the unprecedented, he had to invent the mechanics along the way. There's this great quote in the paper where Gaudi says, "I do not build the Sagrada Familia, the Sagrada Familia builds me." I love that quote. It perfectly captures the essence of iterative deepening. Vision crafting is a reciprocal loop. The leader is continually experimenting, testing, and refining the core idea. Yeah, and he actually used his other architectural commissions as real-world laboratories. Oh, this is the best part. It is. The most famous example is his work on the church at the Colonia Güell. The massive towers he envisioned for the Sagrada Familia presented a severe structural problem. Traditional Gothic cathedrals require flying buttresses, those large, heavy stone supports on the outside of the building, to keep the walls from collapsing outward under the sheer weight of the roof. And Gaudi hated flying buttresses. He called them architectural crutches. Right. So to eliminate the crutches, he essentially had to reinvent how gravity interacts with stone. And his method for doing this at the Colonia Güell was just brilliant. He didn't use complex calculus on a chalkboard. He used strings and weights. Yeah, physical model. He built this intricate model by hanging strings from a wooden board on the ceiling, and then he attached small canvas bags filled with birdshot to various points on the strings. Wait, little bags of birdshot? Yes, tiny weights. Yeah. And by doing that, he let gravity pull the strings downward into these natural continuous curves. They're called catenary arches. Okay, I see. In a hanging chain, all the force is pure tension. There is no bending. So if you take a photograph of that hanging string model and flip the photo upside down, you have the exact mathematically perfect shape for a load-bearing arch. That's incredible. In the inverted model, what was pure tension just becomes pure compression. And stone is incredibly strong under compression. So he figured out how to make the bones of the building support themselves without any external buttresses. Exactly. He took this experimental knowledge from the Colonia Güell and scaled it up to design the sprawling, leaning, tree-like columns of the Sagrada Familia. The vision deepened because he didn't just demand a shape, he discovered the physical laws required to manifest the purpose. The abstract ambition and the material reality just co-evolved. Now, I want to look at this from the perspective of a modern project manager, because honestly, iterative deepening sounds dangerously close to the ultimate corporate nightmare, which is scope creep. Oh, absolutely. Right. You take over a modest neo-Gothic church, and a few years later, you're telling the board, actually, we are going to build 18 towering spires and invent entirely new laws of structural physics to do it. In any normal organization, continually shifting the goalpost and ballooning the budget like that just leads to project failure and massive team burnout. So how did Gaudi's iterations avoid just destroying the project?
It's a great question. The distinction between scope creep and iterative deepening really lies in the relationship to the core purpose. Okay, how so? Well, scope creep happens when features are added tangentially, right? Usually to satisfy different stakeholders or chase passing trends, and that ultimately dilutes the original mission. Iterative deepening, conversely, is a process of finding more rigorous, integrative solutions that serve the singular purpose better. I think I need an example of how 18 towers can be considered an integrative solution rather than just a massive tangential distraction. Sure, let's consider the purpose Gaudi defined. To create a visual narrative Bible for a secularizing city, a single central tower on a neo-Gothic church would just be a height marker. It doesn't tell a story. Right, it's just tall. Exactly. By expanding the design to 18 towers of varying heights and moving the sculptural storytelling to the massive external facades, he solved a symbolic problem and a structural problem simultaneously. Oh, I see. The cluster of towers distributes the immense weight more organically down into the foundation while creating a globally recognizable silhouette that completely fulfills his narrative goal. So the complexity wasn't arbitrary, it was a tighter alignment with the mission. So every iteration was a sharpening of the blade, not just adding more attachments to the handle. That makes a lot of sense. Exactly. So once the vision is formulated and physically deepened, it brings us to the third component of crafting: relational vision transference. Because a perfect structural model locked in Gaudi's mind doesn't actually move a single stone. No, it doesn't. Gaudi understood that for a multi-generational endeavor, the vision must transition into a shared imagination. He didn't rely on issuing top-down directives or circulating memos. He created environments where the vision could be felt. Felt. Yeah, the paper notes how he would stand with his assistants, artisans, and stonecutters, and he'd vividly describe unbuilt towers and facades. He spoke about them not as distant possibilities, but as if they were already physically present in the space. He used sketches, scale models, and intense, passionate language. It's almost like he was creating a localized reality distortion field. That's a great way to put it. Right, he was projecting the future so vividly that the people around him could mentally step into it and walk around. Relational transference is fundamentally about creating the conditions that allow an idea to circulate beyond its originator. Corporate communication often reduces vision to just rhetorical clarity, making sure the words on the slide deck are easy to read. So boring. Right. But Gaudi was transmitting the affective, emotional core of the project. He discussed structural mathematics with his young architects, sure, but he intertwined it with discussions of devotion, sacrifice, and community. He was transferring the why alongside the what. But even a deeply shared dream, resting in the minds of a motivated team, is incredibly fragile. People retire, they move on, or as in Gaudi's case, they die unexpectedly. A shared imagination is going to distort over a century like a massive game of telephone. Oh, definitely. So the vision must be anchored into physical, temporal reality to survive. And this leads to the second major process outlined in the paper: vision structuring. Right. Vision structuring is the mechanism for making the dream durable without making it so rigid that it breaks under future pressures. The author identifies 3 elements here, meaning imbued materiality, multi-temporal anchoring, and transcendent stewardship. Okay, let's break down meaning imbued materiality. Think about walking into an Apple store. The physical layout, the massive glass doors, the open wooden tables, the lack of traditional cash registers, it forces you to interact with the products and the staff in a very specific, communal, unhurried way. Yeah, the space dictates the behavior. Exactly. The physical materials carry the company's vision of accessibility and premium design. Gaudi did this on a monumental scale. He embedded his architectural logic directly into the shapes of the stone. He developed a very specific structural grammar. Instead of designing arbitrary complex curves that only he could understand, he used consistent, mathematically defined geometric surfaces. The paper mentions hyperboloids, helicoids, and paraboloids. Okay, explain what those shapes actually mean for a stonecutter. Why use them? Well, these are known as ruled surfaces. Despite appearing as complex organic curves, they can be generated entirely by straight lines moving in space. Wait, really? Straight lines? Yeah. A hyperboloid, for example, is the shape of a nuclear cooling tower. It looks curved, but you can build it using completely straight steel beams set at an angle. For the artisans, this meant they could carve complex, organic-looking stone pieces using straight edges and simple geometric rules. He was embedding the DNA of the building into the geometry itself.
By doing this, he made it possible for future architects to look at a single column and reverse engineer his entire intent. The material itself communicates the instruction manual. And this strategy overcomes two massive risks in long-term leadership. First, it eliminates the blurry vision bias, where a leader's rhetoric is so abstract that the team has no idea how to actually execute it. Second, it avoids the danger of overspecification. If Gaudi had drawn highly detailed, inflexible blueprints for every single inch of the cathedral, the project would have completely failed. Modern architects wouldn't have been able to adapt those blueprints to use modern reinforced concrete or adhere to 21st century seismic building codes. Oh, that's true. The materials change. By leaving a geometric logic rather than a rigid drawing, he gave future generations a language they could speak fluently to solve new problems. And he also embedded symbolic rules into the physical space. He strictly mandated that the highest spire, the Tower of Jesus Christ, must remain just a few meters below the peak of Montjuic, which is the prominent hill overlooking Barcelona. Right. The physical rule was basically, the work of man must never exceed the work of nature. That is a profound spiritual value anchored permanently into the city skyline. It really is. And the second element of structuring is multi-temporal anchoring. When you are managing a project that will span 140 years, how do you prevent the public and the workers from just losing hope? Yeah, how do you keep that momentum? Well, Gaudi made a highly unconventional, counterintuitive decision regarding the construction sequence. Normally, when building a massive structure, you lay out the entire horizontal foundation, pour the slab evenly, and bring the walls up uniformly over time. Right, you build it layer by layer. But Gaudi rejected that. He knew the funding was erratic and the timeline was vast. If he only built a massive, flat foundation, a future generation might look at a field of ankle-high stones, lose interest, and just pave over it to make a plaza. Right, it just looks like an abandoned lot. Exactly. So instead, he concentrated nearly all the construction efforts and resources during his lifetime on completing just one vertical section, the Nativity facade. I wanted to build one piece all the way to the top. The paper refers to this as creating a temporal scaffold. By finishing the Nativity facade, with its dizzying, intricate sculptures of plants, animals, and the Holy Family, he achieved three distinct psychological victories. He honored the past inspiration of the project, he created urgent, visible momentum for his current workers who could see something beautiful taking shape, and he left an undeniable, soaring, physical template to challenge and inspire the future. The academic term for this is ambitemporality, which is the capacity to weave the past, present, and future together simultaneously. Ambitemporality. Yeah. Gaudi famously defended the agonizingly slow pace of the donation-based funding by stating, "My client is not in a hurry." He possessed this immense, almost unfathomable patience for the long-term realization of the whole, but he paired it with an intense, disciplined urgency in the present day to finish that single facade. He understood the psychology of the small win, but on a macro scale. If you leave behind one impossibly beautiful facade, future generations are virtually compelled to finish the rest of the building, just to see what the whole thing looks like. Which tees up the third, and honestly, likely the most difficult element of vision structuring: transcendent stewardship. Right. This is the moment a leader accepts that they are merely a conduit for a purpose larger than their own ego. Gaudi accepted his mortality regarding the project. So, he transitioned away from being the sole author and became a steward. He spent his later years building massive 1.7 and 1.25 scale models of the naves and the roofs out of plaster. He essentially open-sourced the cathedral. Yes. In the software world, if a brilliant engineer writes a revolutionary program, compiles it into closed proprietary code, and hides the underlying architecture, that program is doomed. Completely. The moment it requires a major update to run on a new operating system and the original engineer isn't around, it just becomes obsolete. But if the engineer leaves behind a highly documented open source code base with clear architectural principles, a global community of developers can update it, adapt it, and keep it alive indefinitely. Gaudi's plaster models and geometric rules were his open source repository. And the resilience of that open source repository was severely tested. During the Spanish Civil War in 1936, when the anarchists broke in and smashed the plaster models, they thought they had killed the Sagrada Familia. They thought it was over. But because Gaudi had structured the vision into a geometric language, his successors, many of whom were his young students, they were able to sneak back into the ruined workshop.
They spent years sifting through the dust and rubble, collecting the thousands of shattered plaster shards. Because the fragments followed strict geometric rules, they could spend decades painstakingly reassembling the models like a massive 3D puzzle. The logic survived the destruction of the physical medium. That is just incredible. The paper introduces a concept developed by researchers Bednar and Brown called organizational ghosts. And Gaudi became an organizational ghost. He exercises influence not through formal authority, because, well, he is deceased, but through the material structures, the reconstructed models, and the embedded rules he left behind. The ghost guides the living without micromanaging them. Exactly. But we have to remember, we have the vision crafted through deep iteration and structured into physical models and temporal anchors. But a structure is still just an empty shell unless people possess a burning desire to actually inhabit it. Right, you could build the most elegant open source code base in the world, but if no developers are inspired to work on it, the project just stagnates, which requires the final crucial process, vision resonating. Vision resonating is the mechanism by which the future becomes collectively inhabited and co-created. It explains how external participants, artisans, and subsequent generations actually internalize the vision and propel it forward. And the paper identifies 3 stages to this resonance, right? Yeah. Awe-inspired appreciation, internalized vision identification, and purpose-infused co-creation. Yes. Let's examine awe first, because this is where the raw emotion of leadership is often just completely overlooked. Yeah, awe-inspired appreciation is a visceral, undeniable physical and emotional pull. The paper shares a striking anecdote about this. In 1925, the scaffolding finally came down from the first completed tower of the Nativity facade. A laborer looked up at the towering organic stone structure and spontaneously remarked in Catalan, "Fa goig," which translates to, "It is beautiful, it is a joy to see." And that reaction was not accidental, it was a calibrated outcome. In management literature, awe is rarely discussed, but it is a potent functional mechanism for organizational resonance. How so? Well, neuroscience and psychology tell us that experiencing awe induces a reflexive pause in human cognition. When we encounter something vastly larger or more complex than our current understanding, it suspends our existing mental schemas. It literally forces our perception to expand, making us highly receptive to aligning with a purpose larger than our immediate individual concerns. Awe breaks you out of transactional thinking. Like if you walk into the interior of the Sagrada Familia today and look up at the branching columns with the light filtering through the stained glass like a dense forest canopy, you are not thinking about your daily commute or your email inbox. No, definitely not. You are entirely suspended in a feeling of vastness. And that suspension makes you deeply receptive to the underlying vision. It bypasses superficial intellectual compliance and engages the individual effectively. But, a fleeting moment of awe is insufficient to sustain decades of grueling stonemasonry. Right. The awe must evolve into the second element, internalized vision identification. This occurs when successors move beyond simply following the rules and begin to deeply internalize the values that generated the rules in the first place. And the text provides incredible historical examples of this deep internalization. Like Domènec Sugranyes, the architect who took over immediately after Gaudi's death. He didn't just passively read the blueprints. He delivered systematic, highly intellectual lectures on Gaudi's logic to the new generation of architects. He embodied the theory. Yeah. And perhaps the most extreme example is the Japanese sculptor Etsuro Sotu. Etsuro Sotu's journey is amazing. It perfectly illustrates internalized identification. He arrived in Barcelona in the late 1970s, and he was simply looking for stone to cut. But as he interacted with the ruins and the ongoing construction of the Sagrada Familia, he felt this profound pull. Yeah. He was tasked with sculpting the intricate fruits, leaves, and figures that adorn the pinnacles, and he quickly realized that he couldn't just chisel a leaf by looking at a botanical drawing. He had to reconstruct the mindset that originally conceived how that leaf fit into the broader spiritual narrative. To truly understand the why behind the stone, Sotu actually converted to Catholicism. He adopted Gaudi's spiritual framework just so he could view the material world through the exact same lens. He didn't just trace a blueprint. He essentially downloaded the operating system of the founder into his own mind. That's exactly what he did. And that profound identification leads seamlessly into the final element of resonance, purpose-infused co-creation. This is where distributed stewardship is actualized. The current builders of the Sagrada Familia are not functioning as human 3D printers, just blindly copying 100-year-old sketches. They are actively confronting and solving modern constraints using Gaudi's logic.
Right, and the construction of the massive Jesus Tower by the current chief architect, Jordi Fali, is a masterclass in co-creation. Due to changes in modern building plans, wind load requirements for a 170-meter tower, and structural shifts that occurred over the decades, the new tower could not physically align with the original interior structural supports Gaudi had planned. So if Fali simply forced Gaudi's sketch into reality, the building would be structurally unsound. It would fall over. So how does an architect honor the vision when the original instructions are physically impossible to execute? He engages in purpose-infused co-creation. Fali and his engineering team designed massive enclosed stone bridges linking the central Jesus Tower to the four surrounding Evangelist Towers. This solved the modern structural constraint by distributing the wind load laterally. Right. However, instead of making them purely utilitarian concrete braces, he designed the bridges to symbolize the spiritual passage from humanity to divinity, preserving and actually enhancing Gaudi's original narrative intent. Fali interpreted the core logic to invent a modern solution that Gaudi never even drew, but one that perfectly serves the ultimate purpose. It's brilliant. It is. But I need to interject with a dose of skepticism on behalf of our listeners operating outside the realm of monumental architecture. Okay, lay it on me. It is easy to comprehend how a Japanese sculptor converting religions or a chief architect building a 170-meter spire can experience profound awe and engage in co-creation. But what about a mid-sized logistics company or a regional accounting firm? Fair point. How does a manager in an industry dealing with supply chains or tax audits possibly utilize the architecture of visioning? Like, does this theory collapse if you aren't building a literal cathedral? That is the most critical translation we must make. The Sagrada Familia is an extreme lens, but the underlying mechanics apply universally. Awe in a logistics company will not be generated by stained glass. Right. Awe is generated by the sudden, visceral realization of scale and impact. Imagine a data analyst working on a routing algorithm. Day to day, it's just code. But if leadership structures a moment where that analyst sees, perhaps through a highly compelling data visualization or a direct interaction with an end user, that their specific algorithm allowed emergency medical supplies to reach a disaster zone 12 hours faster, saving lives. Oh, wow. Right. That sudden expansion of perspective generates awe. It is the profound realization that mundane, localized work connects directly to a massive, meaningful reality. I see. So it is about actively engineering moments where the team can step out of the weeds and witness the vastness of their collective output. It connects back to Sotu and the apple leaf. If a manager can transition their team from merely executing tasks to adopting a shared perspective on why the work matters to the end user, that team is engaging in purpose-infused co-creation. They will start solving logistical problems proactively because they understand the ultimate goal, not just the quarterly metric. Precisely. And when these three massive processes, vision crafting, vision structuring, and vision resonating, interact continuously and recursively, they produce what Yi Tin Li terms emergent effects. These effects fundamentally alter the DNA of the organization. And the paper categorizes these into two primary effects, right? Inviting and enabling. Yes. Let's define those clearly. How does the system invite and how does it enable? Well, inviting refers to the emotional and psychological space created by the vision. It signals to participants that there is a collective future open to their contribution. The awe-inspiring moments, the meaningful materiality, they broadcast a message to the worker. This project is larger than any one of us, it is incomplete, and your unique contribution is required to finish it. It authorizes them to care. Exactly. Enabling, on the other hand, provides the concrete capacity to act. It gives participants the tools, the geometric grammar, the structural rules, and the open source architecture they need to co-create effectively without collapsing the integrity of the project. Okay, so to summarize that dynamic, a generative vision is not a highly detailed turn-by-turn map that you hand to your employees while demanding strict compliance. A generative vision is a finely calibrated compass pointing to the true north of your purpose, paired with a robust set of tools, the grammar, the rules, the resources that you equip your team with. So they possess both the desire and the capability to draw the map themselves as they navigate unknown terrain. That is a perfect articulation of the shift. It fundamentally redefines the role of leadership. The leader is no longer the omniscient hero who dictates every step of the journey. The leader evolves into a catalytic and stewarding force. They catalyze the initial orientation and the purpose, and they steward the architecture of the system that empowers others to build. And the paper actually broadens its scope to provide concrete examples of this architecture operating in modern, fast-paced industries.
The analysis of Lego is particularly striking to me. Oh, Lego is a textbook embodiment of meaning-imbued materiality. Their overarching vision is to inspire and develop the builders of tomorrow through creative play. They do not sustain this multi-generational vision by relying on a charismatic CEO to give daily motivational speeches. They sustain it through their modular product architecture. The physical interlocking plastic brick with its precise clutch power and universal compatibility is the physical grammar. It is a strict rule set that paradoxically enables infinite creativity. The materiality of the brick allows millions of children, adult fans, and independent designers to continuously co-create the vision of play generation after generation without the Lego headquarters having to dictate what they build. And then there's Pixar. The paper explores how Pixar utilizes a mechanism known as the Brain Trust to sustain its vision. The Brain Trust is a small group of senior directors and writers who ruthlessly review films in progress. But the crucial insight is that the Brain Trust is not a quality control checkpoint designed simply to fix a plot hole in Toy Story or Inside Out. Exactly. The paper highlights the Brain Trust as a recursive practice of iterative vision deepening. When the Brain Trust critiques a film, they are simultaneously pulling apart the film and pulling apart their own understanding of what constitutes compelling, emotional storytelling. Every review meeting is a renegotiation and a refinement of Pixar's core vision. They are keeping their founding ethos alive, not by resting on past successes, but by continuously subjecting their vision to rigorous communal stress testing. Which entirely shatters the conventional corporate paradigm of succession planning. Traditionally, when a visionary founder steps down, the board embarks on a desperate search to find a clone someone with the exact same personality and dictatorial control to keep doing exactly what the founder did. Right, the new Steve Jobs. But this research proves that successful succession is not about replacing the hero. It is about having fostered an ecosystem where multiple, diverse stakeholders are already enabled and invited to carry the torch. You don't try to hire another Godey. You build a system robust enough that Fali, Sotu, and hundreds of unnamed stonemasons collectively function as the new visionary engine. It relieves an immense psychological burden from the shoulders of modern leaders. You do not have to possess all the answers for the next 50 years. You simply have to design the architecture that allows the future to solve its own problems while remaining anchored to your core purpose. Yeah. So as we draw these threads together, I want to distill the actionable takeaways from this profound research, addressing both the academic community and the practitioners listening. For the academics, particularly the early career scholars who might be utilizing resources like the AOM SIM-Bytes initiative we discussed, this paper stands as a masterclass in what is called phenomenon-based theorizing. Yes, absolutely. In management academia, there is often a temptation to start with a highly abstract existing theory and attempt to forcefully fit real-world data into those predetermined boxes. Yutin Lee took the opposite approach. Right. He immersed himself in a rich, complex, messy, real-world anomaly, a 140-year-old construction site, and allowed the phenomenon to dictate the new theoretical frameworks. He demonstrated that examining an extreme outlier like a basilica in Barcelona can effectively expose and dismantle the heavily leader-centric biases that dominate traditional management literature. It is a powerful reminder to seek out the strange, the extreme, and the anomalous in the real world, because that is where the most robust theories are hiding. Now, for the practitioners, the founders, the project managers, the team leaders, the takeaway is surprisingly pragmatic. Stop agonizing over the exact wording of your vision statement document. The document is merely a snapshot of a single moment in time. Direct your energy toward building the system. Evaluate your organization. Are you leaving behind meaning-imbued materiality? Do the actual structures, software architectures, meeting cadences, and design grammars you employ daily reflect your deeper purpose? Right, if a new employee looks at how you organize a shared drive, can they deduce your core values without ever reading the employee handbook? Exactly. And critically, are you managing what the text refers to as dual pacing? Are you synthesizing enough fierce urgency in the present moment to get your equivalent of the nativity facade built, while simultaneously cultivating the deep, unshakable patience required for long-term, multi-generational impact? Managing that tension is the hallmark of transcendent stewardship. And this research opens up incredibly curious questions for the future, particularly regarding how these dynamics apply to entirely digital or decentralized environments. We have spent an hour discussing physical architecture, stone, and physical models. How does the architecture of visioning function in a DAO, a decentralized autonomous organization?
That is a fascinating frontier. In a DAO, or an open source software community, there is no physical cathedral to anchor the vision. There are no towering stained glass windows to physically induce awe in the contributors. How do you construct meaning-imbued materiality when your entire organizational structure consists of smart contracts and lines of code executing on a blockchain? The challenge there is to encode the purpose so deeply into the digital governance and the incentive structures that the code itself becomes the temporal scaffold. Furthermore, we must ask if this architecture of visioning can be scaled outward to address the massive, existential, multi-generational global challenges of our era. Yeah, that's a big question. Can we operationalize the principles of vision crafting, structuring, and resonating to organize global coalitions around climate change mitigation, or the complexities of deep space colonization? These are domains where the timelines inherently exceed a single human lifespan. The ultimate beneficiaries of the grueling work being done today are generations of humans who are not yet born. It requires a profound shift in human motivation. It requires us as a society to willingly plant trees under whose shade we intellectually know we will never sit. That is the ultimate metric of transcendent stewardship. It really is. We hope this discussion has brought a sense of expansiveness to your thinking today. We hope it gently challenges how you view your own professional legacy, the ambitious projects you are pouring your energy into, and the invisible systems you are constructing for the people who will eventually take your place. Please take a moment to check the show notes. You will find the link to Yi-Tin Lee's phenomenal article, which we highly encourage you to read in its entirety, alongside the link to the AOM SIM-Bytes initiative, which is a fantastic resource for emerging scholars. We wish you the absolute best on your own research or leadership journey this week. Keep experimenting, keep iterating, and keep inviting others to co-create the future with you. As you navigate your week, we want to leave you with one final lingering thought. Cast your mind back to 1965. Yeah. Picture Le Corbusier and Miro signing that indignant manifesto demanding that the Sagrada Familia be abandoned to the ages simply because the solo genius had passed away. They looked at the site and saw only absence. They completely failed to perceive the invisible, generative system that Gaudi had meticulously constructed. What invisible systems are you building today that will prove your critics wrong long after you pass the baton? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। সালটা 1926, স্পেনের বার্সেলোনা শহর। জুনের এক সাধারণ দিন শহরের রাস্তা দিয়ে একটি ট্র্যাম ছুটে যাচ্ছিল। হঠাৎ সেই ট্র্যামের ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন এক বৃদ্ধ। যার পরনে ছিল অতি সাধারণ, প্রায় জীর্ণ পোশাক, তাই তো? একদম। পকেটে কোনো পরিচয়পত্র নেই। পথচারীরা তাকে সাধারণ কোনো ভবঘুরে ভেবে শহরের দরিদ্রদের জন্য নির্ধারিত একটি হাসপাতালে রেখে আসে। কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি যে ওই অপরিচিত বৃদ্ধটি আসলে কে ছিলেন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। বেশ কয়েকদিন পর যখন তাকে শনাক্ত করা গেল, তখন পুরো বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ সেই জীর্ণ পোশাকের মানুষটি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি আন্তোনি গাউদি। আর মৃত্যুর সময় তিনি রেখে গিয়েছিলেন তার জীবনের সবচেয়ে বড়, বলা যায় সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ এক মাস্টারপিস, সাগ্রাদা ফ্যামিলিয়া। ঠিক, মর্মান্তিক কিন্তু একই সাথে ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর একটি মুহূর্ত। গাউদি যখন মারা যান তখন এই বিশাল স্থাপত্যের মাত্র 15 থেকে 20% কাজ শেষ হয়েছিল। অথচ সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি হল তার মৃত্যুর ঠিক 1 শতাব্দী পার হয়ে যাওয়ার পরও সাগ্রাদা ফ্যামিলিয়ার নির্মাণ কাজ আজও চলছে। একটু থামলি কিন্তু গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে। মানে কিভাবে একজন মানুষের দেখার স্বপ্ন এতগুলো প্রজন্ম ধরে, এতগুলো দশক পেরিয়ে ঠিক একইভাবে জীবন্ত থাকে। ঠিক এই জায়গাটাতেই সবচেয়ে বড় বিস্ময় কাজ করে। সাধারণ হিসেবে তো একজন প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর তার অসমাপ্ত প্রজেক্ট ধীরে ধীরে প্রাসঙ্গিকতা হারায়, অথবা অন্য কেউ এসে তার নিজের মতো করে সেটা পাল্টে ফেলে। একদম। কিন্তু এখানে সেটা হয়নি। আর কিভাবে হয়নি তার পেছনের বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব নিয়েই আমাদের আজকের এই আলোচনা। আজকের এই আড্ডাটি সাজানো হয়েছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট রিভিউতে প্রকাশিত একটি অসাধারণ আর্টিকেলের ওপর ভিত্তি করে। এটি একটি FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল। হ্যাঁ, আর IESE বিজনেস স্কুলের স্বনামধন্য গবেষক ভাইটিন লি
এই দারুণ গবেষণাপত্রটি লিখেছেন। যারা গবেষণার জগতে নতুন বা যারা কেবল নিজেদের থিসিস বা রিসার্চ পেপার শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য এই পেপারটি একটা মাস্টার ক্লাস। সাধারণত আমরা কর্পোরেট জগতে ভিশন বা রূপকল্প বলতে কি বুঝি? কোনো নেতার দেওয়া একটি চমৎকার ভাষণ, কিংবা কোম্পানির ওয়েবসাইটে লেখা ভারী ভারী কিছু শব্দ। ঠিক। কিন্তু এই গবেষণা সাগ্রাদা ফ্যামিলিয়ার উদাহরণ টেনে দেখাচ্ছে যে ভিশন আসলে কোনো স্থির বিবৃতি বা ফ্রেমে বাঁধানো বাক্য নয়। মানে এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। একদম, এটি একটি সৃজনশীল চলমান প্রক্রিয়া, যাকে পেপারে বলা হয়েছে জেনারেটিভ অর্গানাইজিং সিস্টেম, অর্থাৎ এমন একটি ব্যবস্থা যা সময়ের সাথে সাথে নতুন মানুষের হাত ধরে নিজে থেকেই বিকশিত হতে থাকে। অত্যন্ত যত্ন সহকারে লেখা এবং পিয়ার রিভিউ করা এই আর্টিকেলটি পড়ার জন্য সব শ্রোতাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ থাকবে। আর্টিকেলের লিঙ্ক শো নোটে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, পেপারটি পড়লে পুরো ধারণাটা আরও পরিষ্কার হবে। তবে বার্সেলোনার এই জাদুকরী শিল্প স্থাপত্যের রহস্যে পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের নিয়মিত শ্রোতাদের জন্য ছোট কিছু আপডেট একটু জানিয়ে রাখতে চাই। অবশ্যই। প্রথমত, মার্চ 2026 থেকে আমাদের এই পডকাস্ট প্রতি রবিবার এবং সোমবার প্রকাশিত হচ্ছে। রবিবারে আমরা মূলত ক্লাসিক পেপার বা বইয়ের রিভিউ করছি, আর সোমবারে আমাদের ফোকাস থাকছে শীর্ষ পিয়ার রিভিউড জার্নালগুলোর ওপর। ঠিক, অনুগত শ্রোতাদের নিরন্তর ভালোবাসার জন্যই এই উদ্যোগটি চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে অনেকেই হয়তো ভাবেন যে সপ্তাহে কেন মাত্র 2টি পর্ব? এর পেছনে একটা খুব বড় কারণ হলো পরিবেশ। আমরা যারা এআই চালিত পডকাস্টের সাথে যুক্ত, তারা খুব ভালো করেই জানি যে এর পেছনের ডেটা সেন্টারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে পানি ও বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, বিশাল পরিমাণে এনার্জি লাগে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার উদ্যোগে নিজেদের সামান্য অবদান রাখতে এবং আমাদের আলোচনার মান বজায় রাখতেই পর্বের সংখ্যা সপ্তাহে 2টিতে সীমিত রাখা হয়েছে। একদমই তাই। পাশাপাশি একাডেমিক শ্রোতাদের জন্য আরও একটি দারুণ খবর আছে। একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্টের সিম ডিভিশন, মানে সোশ্যাল ইস্যুজ ইন ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, একটি নতুন মাসিক উদ্যোগ শুরু করেছে। ও হ্যাঁ, AOM SIM-Bytes, তাই তো? ঠিক। জুন 2026 থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগে ম্যানেজমেন্ট কমিউনিটির সিনিয়র স্কলারদের ছোট রিল স্টাইলের শিক্ষণীয় ভিডিও প্রকাশ করা হচ্ছে। নতুন গবেষক ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত রিসোর্স। আর প্রথম ভিডিওটি করেছেন স্বয়ং প্রফেসর এড ফ্রিম্যান, যাকে স্টেক হোল্ডার ক্যাপিটালিজমের জনক বলা হয়। হ্যাঁ, আর আনন্দের বিষয় হলো আমাদের এই পডকাস্টের প্রডিউসার সিম কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট কমিটির একজন সদস্য হিসেবে গত 1 বছর ধরে এই উদ্যোগের সাথে আছেন। মানে এই AOM SIM-Bytes-এর কন্টেন্ট ডিজাইন এবং এডিটিংয়ের কাজে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যুক্ত আছেন। এটা সত্যি দারুণ ব্যাপার। ঠিক, এই পুরো উদ্যোগটি মূলত ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শেলডন সিমোলার চিন্তার ফসল, যা বর্তমানে লয়োলা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেনিফার ব্রিফেনের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। হ্যাঁ, আর এই শিক্ষণীয় ভিডিওগুলোর লিঙ্কও শো নোটে দেওয়া আছে। তো চলুন, আমাদের হাউসকিপিং শেষ, এবার সোজা ফিরে যায় বার্সেলোনায়। চলুন। গাউদি মারা গেছেন, তার প্রজেক্ট অসমাপ্ত। এই প্রজেক্টটিকে 100 বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গাউদি আসলে কি এমন করে গিয়েছিলেন? আর্টিকেলের একেবারে শুরুতে একটা দারুণ কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, রূপকল্পের উন্মেষ বা ভিশন ক্রাফটিং। হ্যাঁ, কিভাবে তিনি এই ভিশনটা তৈরি করেছিলেন। গাউদির লক্ষ্য কেবল ইট পাথরের একটা বিশাল চার্চ তৈরি করা ছিল না, তাই তো? একদমই না। সময়টার দিকে একটু তাকাতে হবে। তখন শিল্প বিপ্লব চলছে। বার্সেলোনার শহর খুব দ্রুত আধুনিক আর যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। মানুষ প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। ঠিক। গাউদি খেয়াল করলেন মানুষ প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তার মূল লক্ষ্য ছিল এই যান্ত্রিক শহরে একটি আধ্যাত্মিক নবজাগরণ আনা। শুধু একটা চার্চ বানালেই তো হতো। তিনি জানতেন 10টা সাধারণ চার্চের মতো আরেকটা চার্চ বানালে এই উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাকে এমন কিছু বানাতে হবে যা দেখে মানুষ থমকে দাঁড়াবে। আর এর জন্য তিনি প্রকৃতির জ্যামিতির শরণাপন্ন হলেন। আচ্ছা। তিনি কলোনিয়া গুয়েল নামে তার আরেকটি প্রজেক্টে একটা অদ্ভুত পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন, যাকে পলিফোনিকুলার মডেল বলা হয়। একটু দাঁড়ান, এই পলিফেনিকুলার মডেল জিনিসটা ঠিক কি? এটা কিভাবে কাজ করে? বিষয়টা খুবই চমকপ্রদ। তিনি ড্রয়িং বোর্ডে 2D নকশা আঁকার বদলে ছাদ থেকে অসংখ্য সুতো ঝুলিয়ে দিলেন। ছাদ থেকে সুতো? হ্যাঁ,
এরপর সেই সুতোগুলোর বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট ওজনের বস্তা বা বালির থলি বেঁধে দিলেন। আচ্ছা, ওজন দিয়ে? অভিকর্ষ বলের কারণে ওই সুতোগুলো প্রাকৃতিকভাবেই নির্দিষ্ট বাঁক বা আর্চ তৈরি করল। এরপর তিনি ওই ঝুলন্ত মডেলের নিচে একটা আয়না রাখতেন। আয়না কেন? কারণ আয়নায় ওই উল্টো সুতোগুলোকে দেখলে মনে হতো একটা নিখুঁত বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আসলে অভিকর্ষ বলকে নিজের বন্ধু বানিয়েছিলেন। বাহ, মানে অভিকর্ষ বলই তাকে বলে দিচ্ছে বিল্ডিংয়ের শেপ কেমন হবে। একদম তাই। এই পদ্ধতিটি তিনি পরে সাগ্রাদা ফ্যামিলিয়ায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ব্যবহার করেন। তিনি তার তরুণ স্থপতি ও কর্মীদের কাছে এই স্কেচ, মডেল আর গল্পের মাধ্যমে তার ভিশন এমনভাবে তুলে ধরতেন যেন অদেখা ভবিষ্যৎ সবার চোখের সামনে ভাসছে। মানে উনি শুধু নির্দেশ দিতেন না, সবাইকে স্বপ্নটা দেখাতেন। কিন্তু এখানে আমার একটা খটকা লাগছে। কি রকম? এই যে রূপকল্প বা ভিশন ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে, এটি তো অনেকটা আমাদের সফটওয়্যার আপডেটের মতো শোনাচ্ছে। ভার্সন 1.0 থেকে শুরু হলো, এরপর বাগ ফিক্স করে ভার্সন 2.0, তারপর 3.0 এলো। হ্যাঁ, একটা ভালো সাদৃশ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো রূপকল্প যদি এভাবে বারবার বদলাতে থাকে, তবে কি সহযোগীরা বা অনুসারীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন না? আমি যদি একটা প্রজেক্টের কর্মী হই আর দেখি বসের প্ল্যান রোজ পাল্টাচ্ছে, আমি তো হতাশ হয়ে কাজ ছেড়ে দেব। আপনার খটকাটা খুবই যৌক্তিক। সফটওয়্যার আপডেটের সাথে কিছুটা মিল থাকলেও একটা বড় পার্থক্য আছে। সেটা কি? সফটওয়্যার আপডেটের মানে হলো আগের ভার্সনে কোনো সমস্যা ছিল, কিন্তু গাউদির ক্ষেত্রে তার মূল উদ্দেশ্য বা কোর পারপাস কিন্তু কখনো পরিবর্তিত হয়নি। মানে আধ্যাত্মিকতার যে আবহ তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেটি একদম ধ্রুবক ছিল। তিনি গন্তব্য পাল্টাননি, শুধু সেখানে পৌঁছানোর রাস্তাটা আরও নিখুঁত করছিলেন। আর তিনি এটি একা করতেন না, তিনি কর্মীদের এই প্রক্রিয়ার অংশ বানিয়েছিলেন। ওহ আচ্ছা, মানে কর্মীরাও জানতো যে তারা একটা এক্সপেরিমেন্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। একদম। ফলে এটি কোনো বিভ্রান্তি তৈরি করেনি, বরং কাজের গভীরতা বাড়িয়েছিল। কর্মীদের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে তারা এমন একটা জীবন্ত প্রক্রিয়ার অংশ যা প্রতিনিয়ত আরও নিখুঁত হচ্ছে। বুঝতে পারছি। গন্তব্য স্থির, কিন্তু যাত্রাপথটা নমনীয়। কিন্তু শুধু একটা দারুণ স্বপ্ন আর কাজের উন্মাদনা থাকলেই তো হয় না। না, শুধু স্বপ্ন দিয়ে 100 বছর পার করা যায় না। ঠিক। তাকে এমন একটা কাঠামো দিতে হয় যেন প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরও সেটা টিকে থাকে। গাউদি নিশ্চয়ই খুব ভালো করেই জানতেন যে তার জীবদশায় এই কাজ কখনো শেষ হবে না। অবশ্যই জানতেন। তাহলে তিনি এই শতাব্দী দীর্ঘ কাজকে কাঠামোবদ্ধ করলেন কিভাবে? আর্টিকেল এটাকে ভিশন স্ট্রাকচারিং বলা হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ, ঠিক এই বোঝ থেকেই তিনি একটি অভাবনীয় সিদ্ধান্ত নেন। যখন একটা প্রজেক্ট 100 বা 150 বছর ধরে চলবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনুপ্রেরণা ধরে রাখা খুব কঠিন। তা তো বটেই। তাই পুরো কাজটা একসাথে একটু একটু করে না এগিয়ে তিনি ঠিক করলেন নেটিভিটি ফ্যাসাড বা যিশুর জন্মদৃশ্য সম্বলিত একটি নির্দিষ্ট প্রবেশদ্বারের কাজ তিনি আগে পুরোপুরি শেষ করবেন। আচ্ছা, একটা অংশ পুরোপুরি কমপ্লিট করে ফেলবেন। হ্যাঁ, এটি ছিল তার দিক থেকে একটি মাস্টার স্ট্রোক, যাকে ম্যানেজমেন্টের ভাষায় বলা হয় স্মল উইন বা ছোট বিজয়। এই স্মল উইন ব্যাপারটা কিভাবে পুরো শতাব্দী জুড়ে কাজ করলো? একটু চিন্তা করুন, 1910 সালের একজন সাধারণ রাজমিস্ত্রির কথা। তাকে যদি বলা হয় তুমি এমন একটা বিল্ডিং বানাচ্ছ যা তোমার নাতি পুতিরাও শেষ হতে দেখবে না, তার কাজের মোটিভেশন কোথায় থাকবে? সে তো ভাববে আমি শুধু পাথরই কেটে গেলাম সারা জীবন। ঠিক, কিন্তু গাউদি যখন ওই একটা অংশ পুরোপুরি শেষ করলেন, তখন সবাই চোখের সামনে দেখতে পেল যে আসলে কি অসাধারণ একটা জিনিস তৈরি হতে যাচ্ছে। এটি দেখে অনুদানকারীরা আকৃষ্ট হলো, মানুষের বিশ্বাস জন্মালো। আর সবচেয়ে বড় কথা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্থপতিদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা বা টেমপ্লেট হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু এখানেই তো আরেকটা বড় প্রশ্ন চলে আসে। আমরা সাধারণত দেখি স্বপ্নদ্রষ্টা নেতারা খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রেমী হন। হ্যাঁ, মাইক্রো ম্যানেজ করতে পছন্দ করেন। একদম। কাজের প্রতিটি ক্ষুদ্রতম বিষয় তারা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে চান। ফরাসি স্থপতি লে কর্বুজিয়ের তো সাগ্রাদা ফ্যামিলিয়ার রীতিমতো সমালোচনা করেই বলেছিলেন যে গাউদির এই কাজ অন্য কারোর শেষ করা উচিত নয়। হ্যাঁ, এটা খুব বিখ্যাত একটা সমালোচনা। তো গাউদি শুধু একটা মূল রেসিপি তৈরি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বলে গেলেন, এবার তোমরা রান্না করো। 140 বছরের প্রজেক্টে এত স্বাধীনতা দিলে তো যে যার মতো করে ডিজাইন বদলে পুরো কাজটাকে একটা জগা খিচুড়ি বানিয়ে ফেলতে পারে। গাউদির এই ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা কি চরম ঝুঁকিপূর্ণ ছিল না? অসাধারণ একটা পয়েন্ট ধরেছেন। এই ঝুঁকিটা অবশ্যই ছিল। আর এখানেই গবেষণাপত্রটির সবচেয়ে দারুণ বিশ্লেষণটি উঠে এসেছে।
গবেষক এই মানসিকতাকে বলছেন ট্রান্সেন্ডেন্ট স্টুয়ার্ডশিপ। ট্রান্সেন্ডেন্ট স্টুয়ার্ডশিপ মানে কি দাঁড়ায়? মানে নিজেকে প্রজেক্টের মালিক না ভেবে একটি বৃহত্তর লক্ষ্যের সাময়িক তত্ত্বাবধায়ক বা পাহারাদার ভাবা। গাউদি নিজেকে কখনোই এই ভিশনের একছত্র মালিক মনে করতেন না। আচ্ছা। তিনি জানতেন তাকে স্বাধীনতা দিতেই হবে, কিন্তু ওই যে বললেন, জগা খিচুড়ি হওয়া ঠেকাতে তিনি একটা কাঠামোবদ্ধ নির্দেশনা বা জ্যামিতিক ব্যাকরণ তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। জ্যামিতিক ব্যাকরণ সেটা আবার কি? সাগ্রাদা ফ্যামিলির ভেতরের পিলারগুলো খেয়াল করলে দেখবেন সেগুলো দেখতে একদম গাছের মতো। এগুলো কেবল সৌন্দর্যের জন্য নয়, গাউদি হাইপারবোলয়েড, প্যারাবোলয়েডের মতো জটিল জ্যামিতিক নিয়মাবলী ঠিক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। মানে শুধু নকশা নয়, একটা ফর্মুলা দিয়ে গেছেন। একদম। তিনি ভবিষ্যৎ স্থাপতিদের বলে যাননি যে কোন জানালায় ঠিক কী নকশা থাকতে হবে, বরং তিনি বলে গেছেন তোমরা যে নকশাই করো না কেন সেটাকে এই জ্যামিতিক নিয়মের ভেতন দিয়ে আসতে হবে, যাতে কাঠামোর ভার বহন করা যায় এবং প্রকৃতির সাথে তার মিল থাকে। ঠিক তাই। অর্থাৎ তিনি এমন একটি ফ্রেমওয়ার্ক বা নিয়ম দিয়ে গেছেন যা একই সাথে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, আবার নতুনদের নিজস্ব সৃজনশীলতা দেখানোর জন্য যথেষ্ট নমনীয়। কি অদ্ভুত সুন্দর একটা ব্যালেন্স! আপনি আমাকে একটা নির্দিষ্ট ক্যানভাস আর রঙের প্যালেট দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু কি ছবি আঁকবো সেই স্বাধীনতা আমার থাকছে। একদম নিখুঁত উপমা। আর এর ফলেই হয়তো আর্টিকেলে যাকে বলা হচ্ছে রূপকল্পের অনুরণন বা ভিশন রেজোনেটিং, সেটি সম্ভব হয়েছে। কাঠামো তৈরি হওয়ার পর পরবর্তী প্রজন্ম কিভাবে সেই কাঠামোকে ভালোবেসে আপন করে নেয়, সেটাই তো এখানে মুখ্য বিষয়। হ্যাঁ, আপনি সেরা জ্যামিতি দিয়ে বিল্ডিং বানাতে পারেন, কিন্তু মানুষের আবেগকে যদি না ছুঁতে পারেন তবে সেই প্রজেক্ট বেশিদিন টিকবে না। আর্টিকেলে একটা চমৎকার ঘটনা উল্লেখ আছে। কি ঘটনা? যখন 1925 সালে প্রথম টাওয়ারের কাজ শেষ হয়ে মাচা সরানো হলো, তখন একজন সাধারণ শ্রমিক ওই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাতালান ভাষায় বলে উঠেছিলেন ফাগজ। ফাগজ এর মানে কি? এর অর্থ হলো কি আনন্দময় বা কি সুন্দর। এই যে প্রথম দেখাতেই মানুষের মনে একটা অনাবিল মুগ্ধতা তৈরি করা, এই আবেগটাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষকে এই স্থাপত্যের সাথে যুক্ত রেখেছে। বাহ, দারুণ! আমি এই বিষয়টিকে একটি গানের কভার ভার্সনের সাথে তুলনা করতে চাই। কভার ভার্সন কিভাবে? যেমন ধরুন, সেরা কভার গানগুলো মূল গানের আত্মাকে পুরোপুরি ধরে রাখে, কিন্তু নতুন শিল্পী সেখানে নিজের কণ্ঠের মাধুর্যও যোগ করেন। এখানেও কি ঠিক তাই ঘটছে না? পরবর্তী স্থপতিরাও কি এক অর্থে গাউদির একটা দুর্দান্ত কভার ব্যান্ড? হ্যাঁ, কভার ব্যান্ডের তুলনাটা বেশ আকর্ষণীয়। তবে গবেষক বিষয়টিকে আরও গভীর একটা জায়গায় নিয়ে গেছেন। আচ্ছা। কভার ব্যান্ড সাধারণত মূল শিল্পীর হেড গানগুলো পুনরায় বাজায়, কিন্তু এখানে যা ঘটছে তাকে পেপারে বলা হয়েছে পারপাস ইনফিউজড কো-ক্রিয়েশন। পারপাস ইনফিউজড কো-ক্রিয়েশন মানে মূল উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম হয়ে সহ-সৃষ্টি করা। একদম। জাপানি ভাস্কর এতসুরো সোতো ওর উদাহরণটা দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। তিনি যখন সাগ্রাদা ফ্যামিলিয়ার কাজে যুক্ত হলেন, তিনি শুধু গাউদির নকশা অন্ধের মতো নকল করেননি। তিনি কি করেছিলেন? তিনি বুঝতে চাইলেন গাউদি কিভাবে ভাবতেন। সোতো খুব চমৎকার একটা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি গাউদির দিকে তাকাই না, বরং গাউদি যেদিকে তাকাতেন আমি সেদিকে তাকানোর চেষ্টা করি। ও, মানে তিনি প্রকৃতির দিকে, আধ্যাত্মিকতার দিকে তাকিয়েছেন, ঠিক যেমনটা গাউদি করতেন। ঠিক। এমনকি গাউদির মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য সোতো কেবল গাউদির চিন্তার ব্যাকরণটিকেই ধারণ করেননি, তিনি পুরো দর্শনটিকে আপন করে নিয়েছিলেন। এভাবেই একটা ভিশন সবার হয়ে ওঠে। অসাধারণ। আরও একটা উদাহরণ দিই। বর্তমান প্রধান স্থপতি জর্ডি ফাউলি যখন যিশুর টাওয়ারের সাথে ইভ্যাঞ্জেলিস্ট টাওয়ারগুলোর সংযোগকারী ব্রিজ নকশা করেন, তখন তাকে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা জয় করতে হয়েছিল। কারণ গাউদির আমলে তো আর আজকের প্রযুক্তি ছিল না। ফাউলি ঠিকই গাউদির সেই জ্যামিতিক ব্যাকরণ মেনে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। অবিশ্বাস্য! আপনি শুধু নির্দেশ পালন করছেন না, আপনি মূল উদ্দেশ্যটা অন্তরে ধারণ করে নিজের মেধা ও সৃজনশীলতা দিয়ে প্রজেক্টটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এটি কোনোভাবেই প্রথম স্রষ্টার প্রতি অসম্মান নয়, বরং তার স্বপ্নের প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধাঞ্জলি। একদম সঠিক কথা। আমরা এতক্ষণ ধরে একটি অসাধারণ স্থাপত্যের গল্প শুনলাম, কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা ম্যানেজমেন্ট এবং লিডারশিপের শিক্ষাগুলো আমাদের প্রতিদিনের কর্পোরেট বা একাডেমিক জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পুরো আলোচনা শেষে যদি আমরা এর মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো একটু গুছিয়ে নিই। অবশ্যই।
একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো ভিশন কোনো একটি স্থির বাক্য নয়, এটি নেতৃত্ব এবং সংগঠনের অর্থাৎ লিডারশিপ অ্যান্ড অর্গানাইজিংয়ের মধ্যে এক চলমান ভারসাম্য। আর প্র্যাকটিশনার বা আধুনিক কর্পোরেট জগতের জন্য শিক্ষাটা সম্ভবত আরও বেশি বাস্তবমুখী। পিক্সার অ্যানিমেশন স্টুডিও বা খেলনা প্রস্তুতকারক লেগোর কথা ভাবা যেতে পারে। একদম সঠিক উদাহরণ। পিক্সারের ব্রেইন ট্রাস্টের কথা ধরুন, যেখানে পরিচালকরা একে অপরের কাজের চরম গঠনমূলক সমালোচনা করেন, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য থাকে সিনেমাটাকে সেরা করা। লেগোর ক্ষেত্রেও তো একই রকম, তাই না? হ্যাঁ, লেগোর যে নির্দিষ্ট ডিজাইন রুলস আছে, আপনাকে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে যে কোনো কিছু বানানোর, কিন্তু লেগোর ব্লকগুলোর সংযোগের নিয়ম বা ব্যাকরণটা নির্দিষ্ট। মানে গাউদির সেই জ্যামিতিক ব্যাকরণের মতোই। ঠিক। এগুলো প্রমাণ করে যে প্রতিষ্ঠানকে কেবল একজন ক্যারিজম্যাটিক প্রতিষ্ঠাতার উপর নির্ভর করে রাখলে চলে না, বরং এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে হয় যা আবেগ এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে। আজকের এই স্নিগ্ধ এবং চিন্তাশীল আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে একটা প্রশ্ন মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে, যা আমি শ্রোতাদের ভাবনার জগতেও রেখে যেতে চাই। কি প্রশ্ন? যদি এমন হয় যে আজ থেকে আরও 10 বা 20 বছর পর পরবর্তী প্রজন্মের স্থপতি বা কর্মীদের মধ্যে মূল ভিশন নিয়ে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, তবে সেই সৃজনশীল ব্যবস্থা কিভাবে নিজের ভেতরেরই দ্বন্দ্বের সমাধান করবে? এটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক একটা দিক। তাছাড়া আমরা এমন একটা সময়ে বাস করি যেখানে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো শুধু স্বল্পমেয়াদী লাভের কথা ভাবে। কর্পোরেট জগতের 5 বা 10 বছরের প্রজেক্টে এই 140 বছরের দীর্ঘমেয়াদী ভিশন মডেল কতটা কার্যকর হতে পারে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো ভবিষ্যতের কোনো গবেষণার নতুন পথ খুলে দিতে পারে। একদম। শ্রোতাদের নিজস্ব ভাবনার জগতে আরও গভীরে যাওয়ার জন্য এই প্রশ্নগুলোই আমরা রেখে যাচ্ছি। 1926 সালের সেই জুনের দিনে বার্সেলোনার রাস্তায় ট্রামের ধাক্কায় যে জীর্ণ পোশাকের বৃদ্ধ প্রাণ হারিয়েছিলেন, তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তিনি এমন এক সৃজনশীল ব্যাকরণ রেখে গেছেন যা আজও স্পন্দিত হচ্ছে সাগ্রাদা ফ্যামিলিয়ার প্রতিটি পাথরে। একটি মানুষের দেখা স্বপ্ন কিভাবে একটি মহিরুহে পরিণত হয়, এ যেন তারই এক জীবন্ত কাব্য। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন আর চারপাশের ভিশনগুলোকে নতুন চোখে দেখতে থাকবেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। स्पेन के बार्सिलोना शहर के बीचों बीच एक ऐसी भव्य और मतलब रहस्यमयी इमारत खड़ी है जो बिल्कुल समय को चुनौती देती हुई नजर आती है। सग्रादा फैमिलिया। हाँ, सग्रादा फैमिलिया, जिसका निर्माण लगभग पिछले 140 सालों से चल रहा है। एक वाकई हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। और इसमें सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इसके जो मुख्य वास्तुकार थे यानी अंटोनी गॉडी, उनका निधन तो 1926 में ही हो गया था। सही बात। और उसके बाद स्पेनिश सिविल वॉर का एक ऐसा दौर आया जिसमें उनके बनाए गए कई प्लास्टर मॉडल्स, उनके ब्लूप्रिंट्स और नक्शे लगभग पूरी तरह नष्ट हो गए थे। हाँ, वो एक बहुत बड़ा झटका था उस प्रोजेक्ट के लिए। वही तो। फिर भी आज इतनी पीढ़ियों के बाद उस इमारत का निर्माण कार्य बिल्कुल उनके ओरिजिनल विजन के अनुसार ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा रहस्य लगता है कि कोई इंसान दुनिया से चला जाए, उसके सारे दस्तावेज भी न बचे, फिर भी उसका सपना इतने लंबे समय तक बिना भटके कैसे जिंदा रह सकता है। देखिए, ये स्थिति लीडरशिप और मैनेजमेंट की दुनिया की एक बहुत गहरी पहेली को सामने लाती है। अच्छा, कैसे? आमतौर पर जब किसी बड़े विजन या किसी लक्ष्य की बात होती है तो ये माना जाता है कि वो पूरी तरह से उस लीडर के करिश्मा पर टिका है। मतलब लीडर गया और वो विजन या तो बिखर जाता है या फिर आने वाली पीढ़ियां उसमें इतने बदलाव कर देती हैं कि उसका ओरिजिनल रूप ही खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो अक्सर देखा गया है बड़ी बड़ी कंपनियों में भी। बिल्कुल। लेकिन सग्रादा फैमिलिया एक ऐसा दुर्लभ अपवाद है जो सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी विचार को केवल एक इंसान के दिमाग से निकालकर एक परमानेंट रियलिटी में कैसे बदला जा सकता है। और यही जो अद्भुत पहेली है ना, वो आज के हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। ये एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर है जो प्रतिष्ठित FT50 लिस्टेड जर्नल एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू में पब्लिश हुआ है। हाँ, ये सच में एक शानदार पेपर है। इसका टाइटल है
टुवर्ड्स एन आर्किटेक्चर ऑफ विजनिंग, जिसे ISE बिजनेस स्कूल के यह 3 ली ने लिखा है। सही कहा। और इस लेख की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये विजन को एक बंद डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देखता, बल्कि एक भविष्य के लिए तैयार की गई जीवंत प्रणाली की तरह देखता है, एक सिस्टम की तरह यानी। हाँ, और भविष्य के लिए एक मजबूत प्रणाली तैयार करने का ये जो विचार है, ये आजकल मैनेजमेंट कम्युनिटी में और भी कई जगह देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट सिम डिवीजन ने हाल ही में चुपचाप एक नई मासिक शुरुआत की है। ओह, आप AOM SIM-Bytes की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जून 2026 से शुरू होने वाली एक नई पहल है। ये बिल्कुल उसी तरह का प्रयास है जहां सीनियर स्कॉलर्स का विजन नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। ये बेसिकली रील स्टाइल वाले छोटे वीडियोस हैं जो विशेष रूप से अर्ली करियर स्कॉलर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं। और इसका जो पहला YouTube शॉट है वो प्रोफेसर एड फ्रीमैन का है। वही जिन्हें स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का जनक माना जाता है ना। हाँ, वही प्रोफेसर एड फ्रीमैन। और इस बेहतरीन पहल का नेतृत्व सिम क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी कर रही है। और यहाँ एक और खुशी की बात बताना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो खुद भी इस कमेटी के सदस्य हैं, वो पिछले 1 साल से इस AOM SIM-Bytes इनिशिएटिव के कंटेंट डिज़ाइन और एडिट की प्लानिंग में एक्टिवली वॉलंटियर कर रहे हैं। ये तो वाकई ज्ञान को आगे बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल, ये पूरी जो पहल है ये ट्रेंट यूनिवर्सिटी ओंटारियो की प्रोफेसर शेल्डन सिमोला की सोच का परिणाम है, जिसे अब कमेटी चेयर प्रोफेसर जेनिफर ग्रिफिन, जो लॉयोला यूनिवर्सिटी शिकागो से हैं, उनके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए इसका लिंक शो नोट्स में भी दिया गया है। और भविष्य के लिए सोचने की इसी कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ साझा करना जरूरी है। मार्च 2026 से ये चर्चा अब एक साप्ताहिक कार्यक्रम बन चुकी है, जिसके नए हिस्से हर रविवार और सोमवार को आते हैं। हाँ, और रविवार का दिन किसी क्लासिक पेपर या किताब की समीक्षा के लिए होता है, जबकि सोमवार को हम टॉप टियर पीयर रिव्यूड जर्नल्स के नए पब्लिकेशंस पर फोकस करते हैं। इस लगातार सपोर्ट के लिए सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया। बिल्कुल, लेकिन इस कार्यक्रम को हफ्ते में केवल 2 दिन तक सीमित रखने के पीछे भी एक बहुत ही सचेत निर्णय है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। आजकल AI द्वारा चलने वाले बैकएंड डेटा सेंटर्स में बहुत ज्यादा पानी और एनर्जी की खपत होती है, और ये नेचर और क्लाइमेट पर बहुत भारी दबाव डालता है। सही बात है। तो अपनी रिलीज को सीमित रखना क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के प्रति एक छोटा सा योगदान है, ताकि प्रकृति का संरक्षण भी हो और इन चर्चाओं की क्वालिटी और गहराई भी हमेशा बरकरार रहे। एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अप्रोच रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और जो लोग एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना सफर नया शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये आज वाला पेपर भी एक ऐसा ही बैलेंस्ड दृष्टिकोण पेश करता है। बिल्कुल, सभी श्रोताओं से यही गुजारिश है कि वक्त निकालकर इस थॉटफुली क्राफ्टेड और रिगरसली पीयर रिव्यूड आर्टिकल को जरूर पढ़ें। इसका लिंक भी शो नोट्स में है। अगर इस पेपर को बिना किसी टेक्निकल टर्म के समझा जाए तो ये बताता है कि अक्सर मैनेजमेंट में विजन को केवल किसी लीडर के दिए गए एक शानदार भाषण तक ही सीमित मान लिया जाता है। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि लीडर ने स्टेज पर खड़े होकर कुछ बोल दिया और वही विजन है। वही तो। लेकिन गॉडी का काम ये साबित करता है कि विजन सिर्फ एक स्पीच नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है, एक जीवंत प्रणाली जो पीढ़ियों तक चलती है और जिसमें लगातार नए लोग जुड़कर भविष्य का निर्माण करते हैं। सही कहा। इस जीवंत प्रणाली के पहले हिस्से को पेपर में विजन क्राफ्टिंग यानी विजन तैयार करना कहा गया है। यह समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे कोई विजन सिर्फ एक बार की सोच से एक ऐसी लंबी यात्रा बन जाता है जिसमें दूसरों के लिए भी जगह बनती है। हाँ, मतलब एंटोनी गौरी ने सिर्फ एक सिंपल सा चर्च बनाने के बारे में नहीं सोचा था। इसे पेपर में पर्पस ड्रिवन फॉर्मुलेशन का नाम दिया गया है। उनका मकसद एक आध्यात्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण लाना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इतने बड़े मकसद को जमीन पर आखिर उतारा कैसे गया। यहीं पर गौदी की जो काम करने की शैली थी वो बाकी आर्किटेक्ट से अलग हो जाती है। पेपर इसे इटरेटिव विजन डीपनिंग कहता है। मतलब ये कोई रातों रात बना हुआ मास्टर प्लान नहीं था। अच्छा, तो उन्होंने इसे धीरे धीरे बनाया। हाँ, गॉडी ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में जैसे कोलोनिया ग्वेल में कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आमतौर पर कोई भी आर्किटेक्ट ग्रेविटी
या गुरुत्वाकर्षण को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि वो इमारतों को नीचे की तरफ खींचता है। बिल्कुल, ग्रेविटी की वजह से ही तो बिल्डिंग्स गिरती हैं। वही ना। लेकिन गॉडी ने एक बड़ा ही अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने रस्सियों और छोटे छोटे वेट्स का इस्तेमाल करके एक उल्टा मॉडल बनाया, जहां ग्रेविटी रस्सियों को नेचुरली खींचकर एक कर्व बना रही थी, जिसे कैटेनरी कर्व कहते हैं। ओह वाओ! फिर उन्होंने उसी डिजाइन को सीधा कर दिया, जो बाद में उनके मशहूर इन्वर्टेड आर्चेस या उल्टे मेहराबों में बदल गया। मतलब उन्होंने प्रॉब्लम को ही अपना सोल्यूशन बना लिया। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अगर इसे आज के रेफरेंस में देखा जाए तो ये किसी टेक कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर के बीटा वर्जन को रिलीज करने जैसा लगता है। बीटा वर्जन मतलब कैसे? जैसे किसी शुरुआती आइडिया को एक ही बार में फाइनल नहीं मान लिया जाता ना, उसके बजाय फीडबैक, लगातार एक्सपेरिमेंट्स और रियल वर्ल्ड की चुनौतियों के बेसिस पर उसे धीरे धीरे बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। हाँ, ये बीटा वर्जन वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है। गॉडी का विजन एक बंद डॉक्यूमेंट नहीं था जिसमें कोई बदलाव ना हो सके, और इस बीटा वर्जन को दूसरों तक पहुंचाने का जो उनका तरीका था वो भी उतना ही अनोखा था। हाँ, उसको पेपर में रिलेशनल विजन ट्रांसफरेंस कहा गया है ना। बिल्कुल। उस वक्त काम करने वाले ज्यादातर कारीगर और जो मजदूर थे वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। अगर गॉडी उन्हें कॉम्प्लेक्स 2D ब्लूप्रिंट्स थमा देते तो शायद वो कभी उस बिल्डिंग की भव्यता को समझ ही नहीं पाते। हाँ, 2D ड्राइंग से कहाँ उतना समझ आता है काम इंसान को। इसीलिए गॉडी ने एक 1.10 के रेशो वाले 3D प्लास्टर मॉडल्स बनाए। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने भविष्य को एक ऐसा फिजिकल रूप दे दिया जिसे छुआ जा सकता था, देखा जा सकता था। मैंने पढ़ा है कि वो मजदूरों से उस मॉडल के सामने खड़े होकर ऐसे बात करते थे जैसे कि बिल्डिंग वहां पहले से ही खड़ी हो। हाँ, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते थे। वही ना। ये महज निर्देश देना नहीं था, बल्कि उन्हें उस सपने के अंदर खड़ा कर देना था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी उलझन मेरे दिमाग में आती है। कैसी उलझन? जब वो मुख्य आर्किटेक्ट या वो दूरदर्शी लीडर ही दुनिया में न रहे तो वो बेटा वर्जन फिजिकली जिंदा कैसे रहता है? बिना किसी निर्देश के वो सिस्टम बिखर क्यों नहीं जाता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और ये हमें पेपर के दूसरे बड़े हिस्से की तरफ ले जाता है, जिसे विजन स्ट्रक्चरिंग यानी विजन को आकार देना कहा गया है। ये किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए सबसे नाजुक मोड़ होता है। बिल्कुल, लीडर के जाने के बाद ही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, क्योंकि कागजों पर लिखे नियम तो टाइम के साथ धुंधले हो सकते हैं या उनके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। इसीलिए गॉडी ने नियमों को कागज पर नहीं पत्थरों पर उकेरा। इस कॉन्सेप्ट को रिसर्च में मीनिंग इम्ब्यूड मटीरियलिटी कहा गया है। मीनिंग इम्ब्यूड मटीरियलिटी यानी पत्थरों में मीनिंग डालना। बिल्कुल। गॉडी ने अपने गहरे मूल्यों और वैल्यूज को सीधे तौर पर पत्थरों और ज्योमेट्री के रूल्स में पिरो दिया। इसके पीछे का जो साइंस और फिलॉसफी है वो वाकई बहुत रोचक है। जैसे सेंट्रल टावर का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने जानबूझकर उसकी जो फाइनल हाइट थी उसको बार्सिलोना की मॉन्डुइक पहाड़ी से कुछ मीटर नीचे रखा था। हाँ, और इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत गहरा था। उनका लॉजिक था कि इंसान की बनाई कोई भी चीज नेचर या ईश्वर की बनाई चीज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो नियम किसी बुक में नहीं लिखे गए, बल्कि इमारत के प्रोपोर्शन और उसके साइज में ही हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गए। सही कहा। और साथ ही ज्योमेट्री के नियम जैसे हाइपरबोलॉइड और पैराबोलॉइड आकार इतने क्लियर और लॉजिकल थे कि आने वाले आर्किटेक्ट्स को पता था कि पत्थरों का वेट कैसे काम करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद एक नेचुरली डर तो बना ही रहता है। कैसा डर? कि अगर कोई लीडर अपना कंट्रोल पूरी तरह से छोड़ दे तो आने वाली पीढ़ियां उस विजन का ओरिजिनल मीनिंग ही खो देंगी, या फिर अपनी मर्जी से कुछ भी नया बनाकर पूरे प्रोजेक्ट की डायरेक्शन ही बदल देंगी। हाँ, ये डर तो बहुत ही जायज है। अगर हम 100 साल बाद के लोगों पर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो प्रोजेक्ट के पटरी से उतरने के पूरे चांसेस होते हैं। तो गॉडी ने इस रिस्क को कैसे मैनेज किया? इसे मैनेज करने के लिए उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई उसको पेपर में मल्टी टेम्पोरल एंकरिंग कहा गया है।
गॉडी अच्छी तरह जानते थे कि ये इतनी विशाल इमारत उनके लाइफ टाइम में तो कभी पूरी नहीं होगी। वो तो है ही। अगर वो पूरी बिल्डिंग की नींव एक साथ डालकर हॉरिजॉन्टली काम शुरू करते तो उनकी पूरी जिंदगी में जमीन पर बस कुछ पत्थर ही दिखाई देते। हाँ, हॉरिजॉन्टली तो बस फाउंडेशन ही बनता। कहते हैं उसको पूरी तरह से बनाकर तैयार किया। ओ, तो ये तो एक तरह से करंट जनरेशन के लिए एक स्मॉल विन साबित हुई होगी, है ना? जब लोगों ने उस एक हिस्से की भव्यता को पूरा तैयार देखा होगा तो उनका ट्रस्ट बढ़ा होगा, फंडिंग आना शुरू हुई होगी। बिल्कुल, स्मॉल विन से ही तो मोमेंटम बनता है। और सबसे बड़ी बात, आने वाली पीढ़ियों के जो नए आर्किटेक्ट्स थे उनके सामने एक जीता जागता टेम्पलेट आ गया कि भाई काम किस लेवल का और किस डायरेक्शन में होना चाहिए। एकदम सटीक एनालिसिस है ये। इसके पीछे गाउडी की जो माइंडसेट थी उसे पेपर में ट्रांसेंडेंट स्टूवर्डशिप कहा गया है। उन्होंने खुद को कभी इस प्रोजेक्ट का ओनर या मालिक नहीं माना, बल्कि खुद को सिर्फ एक स्टूवर्ड यानी एक रखवाला माना। हाँ, उनका एक बहुत ही मशहूर कोट भी तो है इस बारे में। हाँ, उन्होंने कहा था, मेरे क्लाइंट को कोई जल्दी नहीं है। यहाँ क्लाइंट से उनका मतलब ईश्वर से था। वाह! इस एक सेंटेंस ने प्रोजेक्ट से टाइम की बाउंड्री और जल्दबाजी के दबाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वाकई टाइम के दबाव को हटाकर सिर्फ क्वालिटी और पर्पस पर फोकस करना, ये किसी भी कॉर्पोरेट लीडर या मैनेजर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ दिमाग में आती है। पत्थर, नियम और ज्योमेट्री तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं ना, वो डायरेक्शन दिखा सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन लोगों के अंदर पीढ़ियों तक उस विजन पर काम करने का, अपना पूरा जीवन उसे डेडिकेट करने का जुनून कहाँ से आता है? मतलब लोग बोर क्यों नहीं होते? ये हमें पेपर के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ ले जाता है, जिसे कहते हैं विजन रेजोनेटिंग। सही पकड़ा। कोई भी विजन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो उस पे काम करने वालों के दिलों में गूंजे नहीं। पेपर इसे ऑ इंस्पायर्ड अप्रिसिएशन कहता है। ऑ इंस्पायर्ड मतलब जब हम किसी चीज को देखकर हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल। जब कोई साग्रादा फैमिलिया के अंदर कदम रखता है ना, तो वहां पेड़ों की तरह ऊपर उठते वो विशाल कॉलम्स और रंगीन शीशों से छनकारी आती रोशनी एक अजीब सा जादुई ऑ पैदा करती है, जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ये सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि इंसान की फीलिंग्स को टच करता है। मुझे याद आ रहा है 1925 में जब एक टावर का काम पूरा हुआ था, तो एक नॉर्मल से मजदूर ने उसे देखकर कैजुअली कहा था, इसे देखना एक आनंद है। हाँ, यही वो गहरा इमोशनल कनेक्शन है जो बाद में उस पे काम करने वालों की अपनी आइडेंटिटी बन जाता है, जिसे पेपर में इंटरनलाइज्ड विजन आइडेंटिफिकेशन कहा गया है। यानी उन्होंने उस विजन को अपना लिया। बिल्कुल। जो आने वाले नए आर्किटेक्ट्स थे जैसे सुग्रानेज और फाउली, उन्होंने कभी भी गाउडी की स्टाइल की अंधी नकल नहीं की। उन्होंने गाउडी के विजन को इतनी गहराई से समझा कि वो उनकी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल आइडेंटिटी का एक अटूट हिस्सा बन गया। और इसी अपनाने की प्रोसेस से पर्पस इन्फ्यूज्ड को क्रिएशन का जन्म होता है। इसका सबसे बेहतरीन और जीता जागता एग्जाम्पल वो जापानीज स्कल्प्टर इत्सुरो सोटो हैं। हाँ, इत्सुरो सोटो का एग्जाम्पल काफी पॉपुलर है इसमें। जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो उनके सामने ये चैलेंज था कि उन हिस्सों की मूर्तियां कैसे बनाई जाए जिनके नक्शे तो नष्ट हो चुके थे। हाँ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस जगह पर गॉडी होते तो कैसा डिजाइन बनाते। तो उन्होंने क्या सोचा? बल्कि उन्होंने अपना नजरिया बदलते हुए खुद से पूछा, गॉडी असल में किस दिशा में देख रहे थे। उन्होंने गॉडी की दृष्टि को अपनाया, नेचर को अपना मास्टर माना और फिर अपनी खुद की क्रिएटिविटी उसमें ऐड की। ये एक बहुत ही पावरफुल पर्सपेक्टिव है। मतलब आप अंधे होकर रूल्स नहीं फॉलो कर रहे, आप उसके पर्पस को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अगर इसकी तुलना आज के टेक एरा के किसी कॉन्सेप्ट से की जाए तो ये बिल्कुल लाइनेक्स जैसे किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की तरह लगता है। लाइनेक्स की तरह? ये दिलचस्प है। कैसे? देखिए, लाइनेक्स में दुनिया भर के डेवलपर्स सिर्फ आंख बंद करके फाउंडर का लिखा हुआ कोड कॉपी पेस्ट नहीं करते। वो उस ओपन सोर्स के ओरिजिनल फिलॉसफी और रूल से गहराई से जुड़ते हैं और उसी स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए नए चैलेंजेस के लिए अपना नया कोड लिखते हैं। विजन वहाँ एक बंद कमरा नहीं
बल्कि एक खुला मंच बन जाता है। वाकई ये लाइनेक्स वाली एनालॉजी इस पूरी प्रोसेस को काफ़ी क्लियर कर देती है। जिस तरह ओपन सोर्स में जब कोई नया टेक्निकल संकट आता है तो सारी कम्युनिटी मिलकर सॉल्यूशन निकालती है, वैसा ही सग्रादा फैमिलिया में भी हुआ। अच्छा, वहाँ कैसा संकट आया था? और सेफ्टी रूल्स की वजह से जो पुरानी ओरिजिनल डिज़ाइन थी वो डायरेक्टली काम नहीं कर रही थी। ओ, फिर उन्होंने क्या किया? तब जो करंट आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने उस स्ट्रक्चर के बेसिक रूल्स के अंदर ही रहते हुए एक नया पुल बनाकर उसे जोड़ा। मतलब पर्पस और फिलॉसफी तो गॉडी का ही था, लेकिन टेक्निक और तरीका पूरी तरह से आज का नया था। वाओ, इस पूरी यात्रा को अगर समेटा जाए तो प्रैक्टिशनर्स और आज के कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए ये पेपर एक बहुत बड़ा टेक अवे सामने रखता है। और वो क्या है? यही कि लीडरशिप का मतलब भविष्य को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कैद करना या हर छोटी से छोटी डिटेल को पहले से फिक्स कर देना नहीं है। बिल्कुल। असली लीडरशिप एक ऐसी प्रणाली या सिस्टम बनाने में है जो इतनी मजबूत हो कि दिशा ना भटके, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबल भी हो कि आने वाले भविष्य को खुद ब खुद पनपने और डेवलप होने का पूरा मौका दे सके। बहुत ही उम्दा तरीके से समझाया। और इसके साथ ही ये जो रिसर्च है वो एकेडमिक्स के लिए भी अपना नज़रिया बदलने की बात करती है। काफ़ी लंबे समय से रिसर्चर्स का ध्यान केवल विजन स्टेटमेंट पर ही रहा है, यानी लीडर्स ने भाषण में क्या कहा या कंपनी के बोर्ड पर क्या लिखा है, बस उस तक सीमित रहा है। हाँ, वो मिशन और विजन स्टेटमेंट्स जो वेबसाइट्स पर होते हैं वही। लेकिन इस पेपर के बाद रिसर्च को विजनिंग सिस्टम की तरफ मुड़ना चाहिए, यानी विजन को क्राफ्ट करना, उसको मटेरियल रूप में शेप देना और पीढ़ियों तक उसकी इमोशनल रेजोनेंस बनाए रखने की जो पूरी प्रोसेस है उसका सिस्टमैटिक अध्ययन होना चाहिए। ये जो शिप ऑफ विजन को देखने का ये नया नज़रिया सच में बहुत फ्रेश है। लेकिन आज की इस लंबी चर्चा के अंत में भविष्य के लिए एक बहुत ही रोचक और डीप सवाल उभर कर सामने आता है। कैसा सवाल? देखिए, आज हम एक ऐसे डिजिटल दौर में जी रहे हैं जहां लगभग सब कुछ वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट होता जा रहा है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस यानी DAOs हो गए या AI से चलने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए। इन डिजिटल सिस्टम्स में तो कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई ईंट पत्थर या भव्य कॉलम्स नहीं होते। हाँ, वहाँ तो सब कुछ सिर्फ डेटा और कोड है। जी, ये एक बहुत ही गहरा मुद्दा है कि क्या ऐसे बिना किसी फिजिकल शेप वाले प्योरली डिजिटल एनवायरनमेंट में कोई विजन पीढ़ियों तक जिंदा रह सकता है? बिल्कुल। मेरा सवाल यही है कि क्या सिर्फ डिजिटल कोड्स, एल्गोरिदम्स और स्क्रीन्स पर चमकते इन पिक्सेल्स के जरिए इंसानों के अंदर वैसी ही ऑ इंस्पायर्ड अप्रिसिएशन पैदा की जा सकती है जैसी एक 140 साल पुरानी खूबसूरत इमारत या उसके वो पेड़ों जैसे विशाल स्तंभ करते हैं? क्या एक वर्चुअल सिस्टम आने वाली पीढ़ियों को उसी तरह इमोशनली बांध के रख सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना आने वाले वक्त में मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी की दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। साइका, और इसी दार्शनिक और डीप सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। जो लोग इस विषय की और गहराई में जाना चाहते हैं वो शो नोट्स में दिए गए लिंक से इस पेपर को विस्तार से पढ़ सकते हैं। साग्रादा फैमिलिया केवल पत्थरों से बनी कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि ये समय और दिशाओं की सीमाओं को पार कर पीढ़ियों के बीच लगातार चल रही एक अनंत बातचीत है। उम्मीद है आज की ये बातचीत भी काफ़ी लंबे समय तक दिलों और दिमाग में गूंजती रहेगी। Forestil dig lige et øjeblik, at du kaster dig over et enormt, altomfattende byggeprojekt. Okay, jeg er med. Men der er så lige en ret markant hage ved det. Du ved med 100% sikkerhed, at du vil være død længe før det overhovedet står færdigt. Det er alligevel en lidt vild præmis at starte ud med. Ja, ikke? Du designer det simpelthen helt bevidst til at spænde over århundreder. Over flere generationer af mennesker, som du Saxon aldrig nogensinde kommer til at møde. Det strider jo næsten imod alt, hvad vi kender i dag. Fuldstændig. Især i vores tidsalder, hvor vi har jo knap nok tålmodighed til at vente på, at vores kaffe bliver brygget færdig om morgenen. Nej, præcis. Det skal gå stærkt.
Men det er altså lige nøjagtigt, at den legendariske arkitekt Antoni Gaudí, han gjorde med Sagrada Familia-katedralen i Barcelona. En bygning, der nu, her 100 år efter hans død, jo faktisk stadig er under konstruktion. Og som alligevel trækker, 5 millioner besøgende til hver eneste år. Lige præcis. Folk strømmer til, selvom det reelt set bare er en gigantisk byggeplads. Den drager simpelthen folk helt enormt. Det er en utrolig præstation. Og det er jo netop den historie og den der dybere ledelsesmæssige gåde, der ligger gemt i murene der, som danner fundamentet for vores samtale i dag. Nemlig. Vi baserer nemlig vores udforskning på en virkelig banebrydende videnskabelig artikel, som er publiceret i det meget prestigefyldte Academy of Management Review. Og det er jo ikke bare et hvilket som helst tidsskrift. Nej, altså det er et såkaldt FT50-listet tidsskrift, hvilket for dig, der lytter med derude, i bund og grund betyder, at det her det ikke bare er et eller andet hurtigt holdningsstykke. Det er tung, gennemtestet videnskab fra den absolute top. Ja, det er blevet endevendt af de skarpeste hjerner. Lige præcis. Før det overhovedet fik lov at se dagens lys. Og artiklen den er skrevet af Yit-Ten Lee fra ISEE Business School. Men inden vi for alvor dykker ned i selve teksten og nørder igennem, så vil jeg rigtig gerne lige tage et øjeblik til at tale direkte til dig, der lytter med derude. Ja, vi har nemlig lidt nyt. Ja, fra marts her i 2026, der er vi nemlig gået over til at udkomme 2 gange om ugen. Helt præcist hver søndag og mandag. Hvilket vi jo er ret begejstrede for. Meget. Søndag er nu fuldt dedikeret til de helt store klassiske artikler, eller boganmeldelser for den sags skyld. Og om mandagen, der fastholder vi så vores stenhårde fokus på de her nyeste publikationer fra de absolut bedste fagfællebedømte tidsskrifter. Præcis, og vi vil i den forbindelse bare gerne sige en enorm varm tak for din ufravigelige støtte. Du lytter med uge efter uge, og det betyder virkelig alverden for os. Det gør det virkelig. Og vi har faktisk truffet beslutningen om netop det her specifikke udgivelsesmønster af en meget særlig årsag. Ja, det er der en god grund til. Det er der. For AI-assisterede produktioner som vores, de trækker faktisk enormt tungt på natur- og klimaressourcer. Det er der mange, der glemmer. Ja, for der er især et betydeligt og ofte fuldstændig usynligt vandforbrug ude i de bagvedliggende datacentre, der jo driver de her teknologier. Nemlig. Så ved at bevidst at begrænse vores udgivelser på den her måde, så giver vi et håndgribeligt bidrag tilbage til klimakampen. Ja, og det vigtige er, at vi gør det helt uden, at vi behøver at gå på kompromis med hverken rigdommen eller dybden i vores samtaler her. Man kan sige, at vi prøver at tage vores egen medicin og tænke lidt mere langsigtet, ikke? Ligesom Gaudí. Præcis. Og nu vi lige taler om at tænke i nye baner for at dele viden og om at give noget videre til fællesskabet, så har du også vist en anden ret spændende opdatering med, ikke? Jo, det har jeg nemlig. Academy of Management SIM Division, og for dem, der ikke lige kender det, så står det for Social Issues in Management. De har faktisk i det stille lanceret et nyt månedligt initiativ. Okay, spændende. Hvad går det ud på? Det hedder AOM SIM-Bytes. Og fra her i juni 2026, der er de begyndt at udgive sådan nogle korte, real-inspirerede videoer, som er skabt af seniorforskere for ledelsesmiljøet. Altså henvendt til hvem? De er direkte henvendt til yngre forskere og Ph.D.-studerende, der måske lige ved at finde fodfæste. Vent lige, så vi taler reelt set om akademiske reels her, altså TikTok for topforskere. Ja, det er jo faktisk ikke helt ved siden af. Den allerførste YouTube-short i serien, den er for eksempel med professor Ed Freeman. Og ham kender mange jo som interessant kapitalismens fader. Lige præcis. Og at se ham formidle sin enorme viden i lige netop det format, det er altså ret fantastisk. Det kan jeg forestille mig. Hvem står bag det rent praktisk? Det hele ledes af SIM Curriculum Development Committee, og her er faktisk en lille, sjov detalje for vores egen Anne Dam. Vores producer her på holdet er faktisk medlem af netop det udvalg. Er det rigtigt? Ja, hun har det seneste år arbejdet frivilligt sammen med udvalgslederne om at planlægge og designe og, redigere hele det her AOM SIM-Bytes-initiativ. Er det det? Det var oprindeligt udtænkt af professor Sheldane Simula over fra Trent University i Ontario. Og nu føres det så stærkt videre af udvalgets nuværende forperson. Som er? Det er professor Jennifer Griffin fra Loyola University i Chicago. Fantastisk. Der ligger vel et link til det et sted? Selvfølgelig. Du kan finde et link til det hele nede i vores show notes, og jeg vil også varmt opfordre dig, der lytter med, til at klikke på linket til dagens artikel af Yit-Ten Lee dernede. Sæt dig godt til rette med en kop kaffe og læs den. Den er virkelig utrolig gennemtænkt, ja. Den er så god.
Men altså, lad os prøve at folde selve teksten lidt ud for lytteren. Hvis du skulle forklare selve kernen i den her forskning til en, der måske lige er startet på sin rejse i den akademiske verden. Okay, helt fra bunden. Ja, og du må overhovedet ikke bruge noget tungt jargon. Hvad handler den så egentlig om? Så vil jeg sige, at den i bund og grund handler om at aflive en meget stædig myte, vi har i ledelse. Myten om visionen. Ja, for vi er jo alle sammen opdraget til at tro, at en vision bare er det samme som en brandtale for en eller anden karismatisk leder. Ja, den der tordnende præsentation på en stor scene med et alt for flot PowerPoint-show. Lige præcis, hvor formålet bare er at pumpe medarbejderne op. Men gennem studiet af Sagrada Familia, der viser artiklen, at en ægte, langtidsholdbar vision er noget helt andet. Hvad er den så? Den er et levende økosystem. Altså det er en proces, der konstant formes af omgivelserne, og som giver genklang i andre mennesker. Det handler simpelthen om, hvordan en drøm om fremtiden kan overleve manden, der drømte den. Altså hvordan den kan bæres videre af helt nye generationer, han aldrig kommer til at møde. Ja, lige nøjagtigt. Det er kernen i det. Det giver mig faktisk et ret klart billede op i hovedet. For hvis en traditionel erhvervsvision er sådan et færdigtegnet skattekort, hvor direktøren bare har sat et stort rødt kryds og siger, hey, vi skal præcis derhen, ja, så minder Gaudís tilgang vil egentlig mere om at bygge et kompas sammen med folkene. Det er en utrolig god måde at stille det op på. Han giver dem et redskab til at finde retningen, ikke? Men selve stien, den skal de selv hugge gennem junglen over de næste mange hundrede år. Præcis. Og forskningen, den deler faktisk den her byg-kompas-proces op i 3 ret klare faser. Okay, lad os tage den første. Den første fase kalder de vision crafting, altså at forme visionen. Og det starter med, at visionen skal være formålsdrevet. Da Gaudí han overtog projektet tilbage i 1883, der indså han lynhurtigt, at det ikke var nok bare at bygge en standardkirke. Det var også en ret turbulent tid for Barcelona, ikke? Meget. Byen var i massiv industriel forandring. Der var smog overalt, sekulariseringen rullede ind over samfundet, og religionen mistede sit greb i folk. Så hvad var hans egentlige formål? Hans dybere formål var at genopleve byens spiritualitet. Og for at gøre det, der var han nødt til at skabe noget, der bogstaveligt talt fik folk til at stoppe op nede på gaden og kigge op. Så det krævede et gigantisk symbolsk bring. Ja, og det var her ideen om de her 18 enorme tårne, der skulle række helt op mod himlen, den blev født. Men han havde jo ikke alle svarene fra starten. Altså, han stod der i 1880'erne og ville bygge noget, der, lad os være ærlige, lignede et enormt drøbstenshul fra en anden planet. Ja, det lignede intet andet. Og det var jo lang tid før, at moderne kraner og computere overhovedet var opfundet. Hvordan i alverden fandt han ud af at få de der sten til rent faktisk at blive stående oven på hinanden? Det gjorde han ved konstant at lære undervejs. Artiklen taler om et begreb, vi kan kalde for iterativ fordybelse. Han begav sig simpelthen ud i eksperimenter, der nogle gange tog ham årtier at løse. Har du et eksempel? Det mest fascinerende er helt klart, hvordan han løste problemet med tyngdekraften. Traditionelle katedraler, som for eksempel Notre Dame i Paris. Dem med de store buer udenpå. Lige præcis. De er afhængige af massive, klodsede støttepiller uden på bygningen for simpelthen ikke at brasse sammen under deres egen vægt. Og dem brød Gaudí sig ikke om? Han havde dem ligefrem. Han kaldte dem for arkitektoniske krykker. Så i stedet for bare at regne sig frem på papir som en normal arkitekt, så brugte han år på at bygge en enorm hængende model i et helt andet parallelprojekt, som hed Colonia Güell. Men vent, hvordan fungerer en hængende model? Er det vitterligt bare snore? Ja, snore. Og det er her genialiteten ligger. Han tog et bræt op i loftet og fastgjorde hundredvis af små snore, der bare hang ned som sådan et stort edderskoppespind. Okay. Og på de her snore, der bandt han små lærredsposer fyldt med blyhagl. Tyngdekraften trak så snorene ned i naturlige, bløde, buede former. De der kædelinjer, ikke? Lige præcis de såkaldte kædelinjer. Når en snor hænger med vægt på, så finder den simpelthen den absolut mest stabile form fra naturens side, hvor spændingen er perfekt fordelt. Men det hænger jo på hovedet. Ja. Og så gjorde han det, at han placerede et stort spejl nede på gulvet under modellen. Når han så kiggede ned i spejlet, så han snorene vendt rigtigt. Og pludselig trådte de der perfekte, selvbærende buer frem for ham. Wow. Buer var så stærke, at de kunne bære enorme mængder tunge sten, helt uden brug af ydre støttepiller.
Han forvandlede altså tyngdekraften fra at være hans værste fjende, til at være den drivende kraft, der reelt set designede katedralen for ham. Det er jo et fuldstændig vanvittigt aha-øjeblik at få. Han fanger simpelthen naturens egne love i et spejl. Det er så poetisk, ja. Men altså, en ting er jo at sidde i sit lukkede værksted og kigge fascinerende ned i et spejl. Noget helt andet er at få en stenhugger, der står ude i støvet på byggepladsen, til at forstå, hvordan den næste sten skal lægges i en bue, han vitterlig aldrig har set magen til før. Ja, overførselen af viden er svær. Hvis visionen virkelig var det her kompas, vi snakkede om, hvordan lærte Gaudí så arbejderne at læse det? Det gjorde han gennem det, forfatteren til artiklen kalder relationel overførsel. Okay, hvad dækker det over i praksis? At han ikke holdt stive, distancerende taler, og han sendte ikke bare nogle komplicerede, todimensionelle tegninger ud til de her håndværkere, som de alligevel ikke forstod. Nej. Han vidste nemlig, at de skulle kunne mærke visionen. Så han insisterede benhårdt på at bruge massive 3D-modeller og gipsafstøbninger. Så de kunne røre ved det? Præcis. Han kunne stå på byggepladsen, pege op i den tomme luft over dem og bruge et helt almindeligt levende hverdagssprog til at beskrive et tårn, der endnu ikke fandtes. Og han blev ved, indtil bygningsarbejderne rent fysisk kunne se det for deres indre blik. Han gjorde simpelthen det abstrakte fuldstændig håndgribeligt for dem. Det lyder helt fantastisk. Altså, mens manden lever og selv kan stå der og pege ud i luften. Ja, det er klart. Men her er simpelthen nødt til at udfordre tankegangen lidt. For når Gaudí dør, og han dør jo desværre ret tragisk, da han bliver ramt af en sporvogn i 1926, så forsvinder den der levende, pegende hånd jo ud af det blå. Det er rigtigt. Det var et kæmpe slag for projektet. Så hvordan undgår projektet at blive et stift, dødt museum? Du kender det jo godt fra erhvervshjældet. Når en stor visionær grundlægger dør eller stopper, så bliver folk bange. Ja, de tør ikke røre ved noget. Lige præcis. De tænker, nej, vi må hellere lade være med at ændre et eneste komma i planerne, for vi kan jo ikke spørge mesteren længere. Hvordan sikrede han sig, at frygten for at gøre noget forkert ikke bare dræbte kreativiteten og fros hele byggeriet fast i fortiden? Og det er præcis den fælde, de fleste moderne organisationer falder direkte i. Og det er her forskningens næste store iagttagelse kommer ind i billedet. Artiklen kalder det her trin for vision structuring, altså at indstøbe visionen i struktur. Så hvordan gjorde han det konkret? Løsningen ligger i det, forskeren beskriver som meningsfyldt materialitet. Gaudí vidste jo godt inderst inden, at han ville dø lang tid før katedralen var færdig. Ja. Så han indlejrede selve logikken og de fundamentale regler for projektet direkte ind i bygningens geometri og i dens materialer. Så selve arkitekturen blev reelt set en form for manual til fremtidige bygherrer? Nemlig. Lad os tage det måske mest ikoniske eksempel overhovedet. Gaudí besluttede og tegnede ind i planerne, at det absolut højeste punkt på katedralen, det store centrale Jesus-tårn, det skal måle præcis 172,5 meter. Okay, og hvorfor lige præcis det tal? Det lyder meget specifikt. Fordi Mayukh-højen, som er et naturligt bjerg, der ligger lige uden for Barcelona, er præcis 173 meter høj. Så den er lige en halv meter lavere. Præcis. Gaudí indkapslede en ufravigelig, underliggende regel. Menneskets bygningsværk må aldrig nogensinde overstige naturens eller Guds eget skaberværk. Det er utrolig elegant. Ja. Når en arkitekt så 70 eller 100 år senere kigger på dimensionerne for tårnet, så behøver vedkommende overhovedet ikke at gætte på, hvad Gaudís kerneværdier var. Ydmygheden over for naturen er bygget direkte ind i stenenes højde. Det er en utrolig smuk måde at diktere en kultur på. Og mens jeg sad og læste artiklen her, så blev jeg faktisk mærke i et andet begreb under netop den her fase. Det forfatteren kalder flertidslig forankring. Ja, multitemporal anchoring. Hvad tænkte du om det? Jamen, Gaudí, han stod jo over for det enorme problem, at hele projektet udelukkende var finansieret af private donationer. Han havde ingen stor statslig støtte i ryggen. Det gjorde det hele meget sårbart, ja. Meget. Det betød jo, at pengestrømmen og byggehastigheden svingede helt enormt fra år til år. Den normale, rationelle logik for en arkitekt ville jo være at bygge det hele sådan lidt af gangen, ikke? Altså lægge et stort fundament over det hele, bygge murene i mikker op hele vejen rundt. Ja, det er sådan, man normalt bygger. Men i stedet besluttede han at fokusere absolut alt, han havde af ressourcer, på at bygge en bestemt facade, den der hedder fødselsfacaden, helt færdig. Lodret op mod himlen, fuldt udsmykket, mens han selv stadig var i live. Og hvad tænker du, at rationalet bag den beslutning var? Jeg tror simpelthen, det var for at give folk en sejr. Altså hvis du som almindelig borger i Barcelona donerer din hårdt tjente penge, og alt hvad du ser efter 15 års byggeri, det er bare en knæhøj mur, der strækker sig over et helt kvarter,
så mister du troen på det. Fuldstændig. Folk har brug for at se noget konkret. Netop. Ved at bygge en spektakulær, vanvittigt detaljeret facade helt færdig, så gav han datidens mennesker et bevis på, at det rent faktisk kunne lade sig gøre. Men endnu vigtigere for vores snak om fremtiden her, han gav jo de næste generationer af arkitekter og stenhugger en fuldskala skabelon, de kunne arbejde ud fra. Præcis. De kunne se ambitionsniveauet. Ja. Han forankrede simpelthen drømmen i nutiden for at sikre dens overlevelse i fremtiden. Det er fuldstændig rigtigt set. Han tænkte i flere tider på én gang. Og det hænger unægteligt sammen med en meget dyrt form for, hvad skal vi kalde det, formynderskab eller stewardship. Hvordan mener du? Jo, Gaudí så jo ikke sig selv som bygningens ultimative ejer. Han var blot dens midlertidige beskytter. Og for ligesom at forstå, hvor unikt det synspunkt er i den branche, så kan vi jo sammenligne ham med den berømte modernistiske arkitekt Le Corbusier. Han var jo meget anderledes anlagt. Det kan man roligt sige. I 1960'erne der argumenterede Le Corbusier og flere andre højtråbende stemmer faktisk meget insisterende for, at byggeriet af Sagrada Familia putte stoppe øjeblikkeligt. Virkelig? De vil bare have det til at stå som en ruin. Ja. Deres argument var, at et arkitektonisk værk altid er uadskilligt fra sin skabers personlige geni. Så når geniet dør, så dør værket. Bum. Hold da op. Det er jo det ultimative udtryk for ego, så nærmest uden mig ind til et værk. Præcis. Men Gaudís systematiske tilgang viser jo det stik modsatte. Han forstod dybt inde, at for at bygge noget, der varer ved, så må du simpelthen fjerne dig selv fra centrum. Du må skabe rammerne for, at andre kan træde ind og tage ejerskab, når du ikke længere selv er der. Og det bringer os til et punkt i vores samtale i dag, hvor jeg rigtig gerne vil have, at du, der lytter med derude, lige mærker efter et øjeblik. Ja. Har du nogensinde stået over for noget, det kan være et fuldstændig overvældende natursceneri, måske et storslået kunstværk, eller endda bare lyden af et enormt kor i et rum med den der perfekte akustik? Noget, som bare var så voldsomt og smukt, at du vitterligt mærkede et fysisk træk i kroppen. Sådan en uforklarlig, næsten magnetisk trang til bare at blive stående lige der i det, og på en eller anden måde blive en del af det. Den følelse, du beskriver så levende der, det er jo selve brændstoffet for byggeriet i dag. Ja. Det er det, der i artiklen udgør den tredje og sidste dimension, det de kalder vision resonating, altså hvordan visionen vækker genklang hos den næste generation. For det er vel ikke nok bare at have gode byggeplaner? Nej, slet ikke, for du kan have de absolut bedste 3D-modeller og de allerklogeste strukturelle regler bygget ind i murene, men hvis folk ikke har lyst til at bygge videre på det i 100 år, så sker der jo intet. Det kræver en indre motivation. Præcis, og det starter næsten altid med ærefrygt. Der er en ret rørende lille scene beskrevet i forskningen fra 1925, da stilladelserne endelig kom ned fra det allerførste færdige tårn. Hvad skete der? En ganske almindelig beskidt bygningsarbejder stod nede på jorden, kiggede op på det imponerende tårn og udbrød bare helt spontant på katalansk Fagoik. Fagoik? Ja, det betyder simpelthen bare, det er en glæde at se det. Det er jo netop ikke en eller anden intellektuel, akademisk analyse af bygningens bæreevne. Det er en rå, ufiltreret følelse i maven. Ja, lige netop. Forskningen understreger også, at ejerfrygt rent faktisk udvider vores opfattelsesevne som mennesker. Når vi føler os små over for noget, der er så storslået, så slipper vi lidt vores egne små hverdagsbekymringer, og vores sind åbner sig op for at internalisere visionen. Gør den til vores egen? Ja, det her folk begynder at gøre projektet til deres helt eget. Et virkelig slående eksempel på det er Etsurusu Toho. Han er en japansk billedhugger. Hvad er hans historie med katedralen? Jamen, han ankom til Barcelona i slutningen af 1970'erne, bare som en ung fyr med rygsæk på, fuldstændig uviden om katedralens historie eller Gaudí for den sags skyld. Bare en almindelig turist. Ja, men da han stod der foran murene for første gang, blev han så ramt af ærefrygt, at han endte med simpelthen at blive der. Han viede vitterligt resten af sit liv til at hugge stenene og færdiggøre fødselsfacaden. Han konverterede en dag til katolicismen for fuldt ud at kunne forstå Gaudís ånd og intentioner. Det er jo helt utroligt. Byggeriet var pludselig ikke bare et arbejde for ham. Det blev hans identitet. Fra en tilfældig japansk backpacker til en livslang vogter af en stor katalansk drøm. Det vidner jo om en vanvittig, nærmest overnaturlig tiltrækningskraft i det værk. Helt enig. Men det rejser jo et eller andet sted også et vigtigt spørgsmål om grænsen. Altså grænsen mellem at bevare noget gammelt og at turde skabe noget nyt. For hvis visionen vitterlig er et kompas,
og ikke et fastfrosset skattekort, som vi talte om før, så må der vel også være plads til at innovere for dem, der tager over i dag. Heldigvis. Og det er præcis her, at den sande lakmusprøve for en visions levedygtighed findes, ifølge forskeren. Gennem medskabelse. Har vi et nyere eksempel på det? Ja, den nuværende chefarkitekt på projektet, Jordi Fowlie, han gav os et helt perfekt moderne eksempel for nylig, da han skulle i gang med at planlægge byggeriet af netop det her centrale Jesus-tårn, som vi talte om tidligere. Ja, for jeg husker fra teksten, at der stødte de ind i nogle ret massive problemer, ikke? Man kan jo ikke bare genbruge ingeniørberegninger, der er 100 år gamle, især ikke når det kommer til moderne bygningsreglementer og strenge vindsikkerhedskrav. Præcis. Materialerne og lovkravene har jo ændret radikalt siden Gaudís tid. Da Fowlie og hans ingeniørteam sad og kiggede på de oprindelige tegninger og modeller, der indså de, at designet til Jesus-tårnet ganske enkelt ikke længere passede arkitektonisk og strukturelt sammen med de 4 evangelisttårne, der står rundt om det. Okay, så det vil simpelthen være ulovligt at bygge det i dag. Ja, hvis det skulle opfylde nutidens sikkerhedskrav, så kunne det ikke lade sig gøre. Hvis de udelukkende var bundet som slaver af fortiden, så ville de have måttet opgive byggeriet af det vigtigste tårn der. Så hvad pokker gjorde de i stedet? De brugte deres dybe, internaliserede forståelse af Gaudís ånd til at designe noget helt nyt. De tegnede og byggede 4 nye forbindelsesbroer, der går mellem evangelisttårnene og det centrale Jesus-tårn. Som altså ikke var at finde på de oprindelige tegninger overhovedet? Nej, overhovedet ikke. De var en fuldstændig moderne tilføjelse, men fordi teamet gennem mange år havde studeret Gaudís naturinspirerede logik så indgående, så blev broerne designet, så de både løste det moderne strukturelle problem rent ingeniørmæssigt, og samtidig passede de perfekt ind i den teologiske symbolik. Det er virkelig smart tænkt. Broerne kom simpelthen til at repræsentere den åndelige passage, hvor evangelisterne leder mennesket op mod det guddommelige. De løste et meget praktisk problem for det 21. århundrede ved at bruge et værdikompas fra det 19. århundrede. Det er medskabelse i sin absolut reneste form. Det er en fantastisk historie. Så lad os prøve at samle trådene lidt her til sidst og kigge på, hvad alt det her egentlig betyder for os i dag. Ja, lad os det. Nu kan I se, når man lytter med her som akademiker, der forsker i ledelse til daglig, eller man sidder ude i den virkelige verden og forsøger at lede et team, drive en virksomhed, eller måske bare skabe en lille forandring i sin lokale idrætsforening. Principperne er de samme. Ja. Hovedbudskabet må jo være, at rigtigt lederskab ikke handler om at stille sig op på ølkassen og bare råbe ordre ned gennem rækkerne. Det handler om at bygge et økosystem. Et system, der er så robust og meningsfyldt for folk, at det rent faktisk fortsætter med at fungere, selv den dag du træder ud af lokalet for allersidste gang. Helt enig. Og for en drøm skal bestå så længe, så skal den, som vi har set, forankres enormt dybt i processerne og materialerne omkring os. Og artiklen den peger faktisk også på nogle moderne organisationer, der har formået at gøre netop dette, så vi ikke kun snakker om katedraler. Ja, hvem fremhæver de? De nævner for eksempel en gigant som danske Lego. Deres grundlæggende vision er jo at inspirere morgendagens bygger gennem det, de kalder ubegrænset leg. Ja. Og den vision, den overlever jo ikke på grund af skiftende karismatiske direktører. Den overlever simpelthen, fordi den er indlejret i et unikt fysisk system. Den måde knopperne og rørene inde i en Lego-klods griber fat i hinanden på, det er selve strukturen. Uanset om klodsen er støbt i 1988 eller i 2026, så passer den ind i systemet. Systemet tvinger nærmest brugeren til at være kreativ, men inden for nogle meget faste og alligevel uendelig fleksible rammer. Det er sjovt, jeg har aldrig tænkt på Lego-klodsen som en parallel til Gaudís arkitektur før, men det giver jo utrolig god mening. Et andet fantastisk eksempel, jeg bed mærke i for teksten, det er filmstudiet Pixar. Ja, deres brain trust. Lige præcis. For i filmbranchen i Hollywood, der er egoet jo ofte den absolut største trussel mod en god historie. En dygtig instruktør kan lynhurtigt blive så forelsket i sine egne vanvittige idéer, at filmen fuldstændig mister sit hjerte og sin røde tråd. Det ser vi tit, ja. Og Pixars løsning på det problem var at skabe et system, den her brain trust, hvor alle instruktører systematisk, uden undtagelse, præsenterer deres rå skitser for hinanden, og her er den geniale regel. Panelet har ingen som helst autoritet til at tvinge instruktøren til at ændre noget. De kan ikke bestemme over filmen. Nej. De kan udelukkende give nådesløs, men ærlig feedback ud fra Pixars fælles vision om, hvad god historiefortælling er.
Så systemet beskytter reelt set historien mod instruktørens ego og tvinger filmen til at udvikle sig organisk, præcis ligesom Gaudis byggeprincipper gjorde for katedralen dengang. Altså både med Lego og Pixar, der tillader og nærmest fremtvinger det underliggende system en form for kontinuerlig tilpasning og medskabelse fra den næste generation af medarbejdere. Alt imens selve kernevisionen forbliver fuldstændig intakt og genkendelig. Det giver utrolig god mening. Og mens jeg sad og forberedte mig til i dag og tykkede på de her eksempler, så slog en tanke mig. Et spørgsmål, som jeg egentlig rigtig gerne vil give direkte videre til dig som lytter. Noget, du måske kan lade summe lidt i baghovedet resten af ugen, når du sidder på kontoret eller i bilen. Et lille tankeeksperiment. Ja. Vi lever jo lige nu i et, lad os bare kalde det, hyperaccelereret samfund. Vi er totalt omgivet af tech-giganter, hvis virkelighed opererer i de her agile sprints på 14 dage. Vi står midt i klimakriser og store sociale bevægelser, der med fuld ret skriger på synlige resultater her og nu, ikke om 15 eller 50 år. Nej, alt skal gå enormt stærkt. Ja. Alt i vores moderne liv synes at blive målt i hurtige kvartalsregnskaber, likes på sociale medier og umiddelbar behovsudsættelse. Hvis vi kigger helt ærligt på os selv og vores organisationer i dag, er vi så overhovedet i stand til at bygge katedraler mere? Det er et tungt spørgsmål. Hvordan balancerer vi det brændende, akutte behov for handling lige nu med modet til at starte noget, hvis frugter vi måske aldrig nogensinde selv kommer til at høste? Har vi simpelthen mistet den grundlæggende tålmodighed, der kræves for at lade en vision række ud over vores egen lille levetid? Det er et ufatteligt vigtigt og måske også en lille smule skræmmende spørgsmål. For det at bygge en katedral i overført betydning, det kræver jo, at vi tør give slip på kontrollen. Måske er det præcis i den her hastighedens og teknologiens tidsalder, at vi allermest har brug for at lære af en mand, der roligt lagde en sten af gangen og designede et system til dem, der først vil blive født 100 år senere. Det tror jeg, du er helt ret i. Som Gaudi selv bemærkede en gang med stor ro, da han blev spurgt om, han dog ikke var frygtelig frustreret over det ufatteligt langsomme tempo på byggeriet. Min klient har ikke travlt. Min klient har ikke travlt. Sikke en afvævnende og enormt kraftfuld sætning. Forestil dig lige at have den ro med i maven, når du kaster dig over dit næste store projekt. Ja, det sætter tingene lidt i perspektiv. Det gør det virkelig. Vi vil i hvert fald gerne takke dig af hele vores hjerte, for at du ville bruge en lille del af din dag på at tage med os på denne her ret fantastiske, intellektuelle rejse gennem tid og sten. Det har været en fornøjelse. Vi håber inderligst, at du vil bære bare en lille fli af Gaudis langsigtede, uforvigelige ro med dig ind i din egen uge. Vi høres ved.